हेलो। हेलो। जी। हेलो। स्नेक हर्षलला विचार किती नंबर आहे.
भाऊचल. अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सानी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ग रि ग नि सा नि प नि सा रि नि सा नि सा ग ग रि ग रि म म ग रि ग प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 ना
चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी
गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर सनी पम गम पनि सनी सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग स सनी सा स सनी सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ध रि ध नि सनी पनि ध रि ध सनी सा ग ग रि ध रि म ग रि ग म प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा पनि म प ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय
छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना, ना। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना, 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 ना। सनि पम गम पनि सा नि सा ग म ग सा नि पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा सा नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि पनि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि म म ग नि ग प प म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना, 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा सनी पम ग म पनि सा नि सा ग म ग सा नि पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ध रि ध नि सा नि प नि ध रि ध नि सा ग ग रि ध रि म म ग रि ग प प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी पम ग म पनि सा नि सा ग म ग सा नि पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ध रि ध नि सा नि प नि सा रि ध नि सा ग ग रि ध रि म म ग रि ग प प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा। सनी पम गम पनी सा नि सा ग म ग सा नि पनी सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि sa रि sa नि सा नि प नि सा रि सा नि सा ग ग रि सा रि म म ग रि ग म प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी पम गम पनि सनी सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सा सनी सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ग रि ग रि सनी पनि सा रि सनी सा ग ग रि ग रि म ग रि ग म प म ग म ग रि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी पम ग म नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र
सांसद, भारतीय छात्र सांसद, भारतीय छात्र सांसद, भारतीय छात्र सांसद। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि म म ग नि ग प प म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना ना
चला है तूफान अब ना थमेगा, चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
Many important personalities would be participating in this 3-day conclave of Bharatiya Chhatra Sansad. I'm sure you all are aware that there are some important activities that happen in Bharatiya Chhatra Sansad, and one of which is Youth to Youth Connect. Of course, it's not possible for all of you to come here on this stage and discuss and deliberate about the issues which are taking place or which are there in our country today. But you all might have solutions, you might have some suggestions to solve some of the pertinent problems that our country is facing today. And hence, this stage, this platform of Bharatiya Chhatra Sansad has created an important activity of Youth to Youth Connect. Every day after the main sessions are over from this stage, you all are going to assemble in few specific rooms, and you are going to discuss and deliberate the solutions to the problems which are being discussed. I request my team if they can please show on the big screen the rooms and the place where the Youth to Youth Connect activity would be happening. Next slide, please. Yes, so these are the venue details. As you can see, there are 6 topics which are being discussed in Youth to Youth Connect. I request all of you to take a photograph of this so that you would remember the place, the building, the classroom number where a specific problem would be discussed. As you can see, there are 6 topics: higher education in the era of AI and ChatGPT, which would be discussed in Maitreyi building, room number 101 and 102. Second is substance abuse and its impact on youth. Third, carbon neutral environment. Fourth, social media facts and fakes. Waste management is the 5th one, and urban transportation is the 6th one. You all are requested to select one topic of all these 6. Okay? So as a student leader, you have to participate in one topic in any one room. So right now, as we are sitting here, decide your topic and decide your room. So the moment you are asked to visit or proceed for Youth to Youth Connect activity, you all would be going to Maitreyi building, which is right behind this main stage. So you'll go into that building in a specific room, and you all the student leaders coming together would be discussing the solution to the problems which are being discussed in the room. I hope the concept of Youth to Youth Connect is clear to all of you. My friends, let me share my experience with all of you that this Youth to Youth Connect activity proves to be one of the highlight of Bharatiya Chhatra Sansad, as when the students come together and deliberate on the issues, you have no idea, my friends, believe me, when you will participate in Youth to Youth Connect activity, you will understand the kind of novel solutions your friends would come up with. They will charge you from within. Thank you very much for your attention. I request all of you once again to please participate in Youth to Youth Connect activity after the main session when asked to. Thank you very much. In a few moments from now, we will be starting with the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. But in spite of having so much of student leaders in front of me, I can't still feel the energy. Can I hear some noise? How's the Josh? How's the Josh? Can't hear you guys. How's the Josh? How's the Josh? Okay, so I would request all of you to maintain this Josh and keep it rising for over the period of next 3 days, because some of the great personalities are going to visit
this very stage of Bharatiya Chhatra Sansad. One more important announcement for all of you. This platform of Bharatiya Chhatra Sansad is not a one-way traffic. Each one of you would get an opportunity to ask the question to the stalwarts which are here on this stage. You can see two podiums which are set up among you. If I may request my camera team, मैं कैमरा टीम से अनुरोध करूंगा कि वो अगर अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सानी प म ग म नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना ना
चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा, चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर सनी पम गम पनि सानी सा गम ग सनी पनि सा ग म ग सा पा म ग सा सनी सा सनी सा ग ग ग म ग ग रे 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 सनी पनि सनी सनी सा ग ग रे म ग ग म म ग म ग म सा ग नि सा पनि म ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण।
जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत
अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा सनी पम ग म नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। Sani pa ma ga ma pa ni sa ni sa ga ma. We are now all set to witness the arrival of Honorable Venkaiah Naidu ji, and all the dignitaries are making their way onto the main stage. The former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, is arriving towards the main stage, and it is our good fortune to have such a tall personality among us. I request all the student leaders, those are still standing, to kindly accept the chairs. Any moment we will witness the arrival of Shri M. Venkaiah Naidu ji, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, and all the dignitaries who are participating in the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Let's give a big round of applause, my friends. A big round of applause and a standing ovation to Shri M. Venkaiah Naidu ji. It is indeed our good fortune. A big round of applause. It is indeed our good fortune that such tall personalities are participating in the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Shri Rahul Karad sir, and all the dignitaries are making their way for the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. I request all the student leaders to kindly accept the chairs. मिलजुल कर अब काम करेंगे, आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। A very warm welcome to all the student leaders, dignitaries, as we are all set for the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. With a strong interest to pioneer a change in the political and social arena with a defined object, and to inspire the next generation to embark on a path taking on the mantle of Indian political leadership, MIT School of Government, Pune was launched in the year 2005. My friends, we expanded the canvas of the School of Government in year 2011 and brought out the classroom training to the thousands of common youth through Bharatiya Chhatra Sansad. In the last 12 years, the platform, the movement, has captured the imagination
and conscience of thousands of spirited youth and have joined them together for the singular purpose for strengthening the democratic fabric of our nation. It is indeed heartening to look back on the history of Bharatiya Chhatra Sansad. I request my technical team if they can please take us down the memory lane and show us a film about Bharatiya Chhatra Sansad. In the heart of the world's largest democracy, a transformation is underway. A transformation of the youth for the bright future of Bharat. A process led by young leaders in the colleges and universities. This is the Indian Students' Parliament, or the Bharatiya Chhatra Sansad, BCS, where Bharat's future leaders gather to shape the destiny of a nation. All under the visionary leadership of Shri Rahul V. Karad. Eminent politicians, scientists, social activists, bureaucrats, actors, film directors, musicians, spiritual gurus, journalists, and many more have graced the platform of BCS. And let me say to you, you are right to be impatient. We need change in this country. We need to be able to address and tackle the real problems of our people. पूरे भारत के युवा वर्ग, इंटायर यूथ फोर्स ऑफ द कंट्री, हम लोग सब साथ चलेंगे और इंडिया को एक ग्रेट सुपर पावर हम लोग जरूर बनाएंगे. आपके माध्यम से हम बना सकते हैं. The journey of BCS began over a decade ago, precisely in 2011. A mission initiated by MIT School of Government, BCS has set out to uplift the image of Indian politics. Propagation of cleaner, informed and healthier democratic practices and motivation to youth to take up these practices in social life are the founding objectives of the BCS. With over 10,000 students from more than 450 universities across 28 states and 8 union territories participating each year, we see the fruits of the laborious journey of BCS. BCS alumni, now at the grassroots and higher levels of social and professional life, remain committed to creating a better Bharat. Our vision is to instill the spirit of student politics, public-spirited values and social sensitivity in the youth. We aim to elevate the role of youth in political and democratic processes, ultimately evolving a healthy democratic system. Our mission is to create ethical, spirited and competent public leadership, a leadership that bridges the gap between governance today and the governance we aspire for. Are you ready to be inspired? To be a part of the change? Join us. The Bharatiya Chhatra Sansad welcomes you. Join the movement, shape the nation. Bharatiya Chhatra Sansad, empowering youth, strengthening democracy. Indeed, a fascinating platform, a fascinating movement which is going on for the last 12 years, Bharatiya Chhatra Sansad. And we all have gathered here today for the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Let's give a big round of applause to entire gathering and execution of Bharatiya Chhatra Sansad, my friends. And now to begin with, we have a beautiful performance to beautify this inaugural session, which is by MIT World Peace University's Cultural Club. The club is active for 35 years and it is going to showcase the unity in diversity, the culture and patriotism. It is going to be a group performance and a combination of live singing, instrument playing, dancing and much more. So please put your hands together and motivate with a big round of applause the Cultural Club of MIT World Peace University. कोई भी ऑडियंस को पिक नहीं दिखाएगा, कोई भी ऑडियंस को पिक नहीं दिखाएगा, ठीक है? चलो रेडी स्टार्ट. चेक चेक.
गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मते मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है। जा जमाने को दिखा कर तुम कदम क्या होता है। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह भी क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसके नजरे उतारे। डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया। गणपती चरण डोळ्यान पाहिलं रूप तुझे प्रेमे आनंद पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं वा करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीहरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। A big round of applause, my friends, to all the performers. A big round of applause. Such a beautiful performance by all the performers of World Peace University's Cultural Club. Thank you very much for putting up such a beautiful performance. I would now like to request all the dignitaries to joining hands for ringing the bell of democracy, an important tradition, the culture of the platform of Bharatiya Chhatra Sansad. And let's this vibration of this beautiful performance continue as we join hands for ringing the bell of democracy, giving a loud and clear signal that we all stand united
for strengthening the democratic fabric of our nation. A big round of applause, my friend. A big round of applause as all the dignitaries are joining hands for ringing the bell of democracy, the representation of entire India joining hands for ringing the bell. Such a beautiful moment. I request all the dignitaries to join us on stage for lighting the traditional lamp. I request former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, UNESCO Chairholder, Revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Shri Rahul Karad sir, Shri Basavraj Horachi ji, Shri Satish Mahana ji, Shri U.T. Kadir Farid ji, Shri Girish Gautam ji, Professor Ram Charan ji, Vice Chancellor Dr. R.M. Chitnis, and other representatives of the university to join hands for lighting the traditional lamp. Lighting the traditional lamp is an important tradition of our culture, which symbolizes that this light will show us the path for future, the wisdom that would be spread by this light. All the dignitaries are joining hands for lighting the traditional lamp in the inaugural session of this 13th Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause, my friends, as the lamp is being lit, marking the inaugural of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause, my friends. There should not be a short of applaud. It's an important moment. Thank you. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs. Thank you very much, all the dignitaries, for joining hands for lighting the traditional lamp. My friends, from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, it is a very special moment where we witness the inauguration of this movement for the 13th consecutive year. My friends, this platform has established its credibility not only in India but across the globe, with support and encouragement of flowing from all over the world. Many of the important democratic organizations of global governance have termed Bharatiya Chhatra Sansad as an exceptional model for the entire world. But this is just a beginning, and I'm sure there is much more to come our way. To begin with this ceremony, as per the tradition of this platform, I would like to request everyone to rise in their seats. I request everyone on the dais, off the dais, to please rise in your seats as we are going to witness the national song Vande Mataram, which would immediately be followed with the World Peace Prayer, a prayer that does not talk about any caste, creed, or religion. So we are going to witness the national song followed by World Peace Prayer, please. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram.
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। I request everyone to join their hands, close their eyes, and wholeheartedly participate in World Peace Prayer. नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you very much. My friends, considering the vastness of India, the path ahead is enormously challenging as we want to impact and reach further and deeper. To make us understand the stage, the platform of 13th Bharatiya Chhatra Sansad and welcome all the dignitaries on the dais, I would first like to request the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, to kindly propose his welcome address. Please put your hands together and welcome with a round of applause Vice Chancellor Dr. R.M. Chitnis sir. I request all the students in the back kindly settle down faster. Good morning and namaskar to all of you. Honorable dignitaries on the dais, I am here to welcome all of you who have gathered here in large numbers for the 13th edition of flagship program of MIT World Peace University, MIT Group of Institutions, Bharatiya Chhatra Sansad, popularly known as BCS. May I, on behalf of Founder President and UNESCO Chairholder for Human Rights, Peace and Democracy, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, the Honorable Executive President of MIT's MIT Group of Institutions, Sri Rahul Vishwanath Karad sir, all the trustee members, faculty members, all the staff members, and all the students of MIT World Peace University, may I extend a warm welcome to all the guests of honor of this grand festival of democracy and grand festival of
youth leadership. A cordial welcome to Honorable Shri Venkaiah Naidu sir, former Vice President of India, Shri Basavaraj Horetti ji, Honorable Chair ji, Honorable Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Honorable UT Khadir Farid ji, Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, Shri Girish Gautam ji, former Speaker and now member of Madhya Pradesh Legislative Assembly, Professor Ramcharan sir, Honorable world-renowned business advisor and author and speaker of Harvard Business School, USA. You may be aware that Bharatiya Chhatra Sansad is a non-political platform to sensitize and harness the power of youth, mainly through the Students' Council members, such as General Secretaries, Joint Secretaries, socially active and politically sensitive students. Also, student leaders from thousands of colleges participating right now in this hall. Bharatiya Chhatra Sansad, sirs, was conceptualized and initiated in 2011 by visionary Shri Rahul Vishwanath Karad sir, our executive president, and a dynamic and prolific leader who has tremendous pride and respect for our great nation Bharat. So much so that he has been striving to officially name India as Bharat and name our Independence Day as National Day of Bharat. Last year, sirs, Bharatiya Chhatra Sansad completed 12 long years of its sincere and successful organization. 12 साल एक तप होता है, एक तपस्या होती है, एक तपपूर्ति मनाई गई पिछले साल छात्र संसद की। मानो जैसे राहुल कराड़ सर ने सुलगाई हुई इस लोकतंत्र की, सुलगाई हुई इस युवा यज्ञ की एक तपश्चर्या बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंच गई। Let's give a big round of applause to Honorable Rahul Vishwanath Karad sir. And the passion of Rahul Karad sir towards democratic fabric and parliamentarian systems led to the successful organization of first of its kind National Legislators Conference, which was held in June 2023 at Geo World Center, Mumbai, attended by 2,500 legislators from various states across Bharat. My dear friends, in the 75 years history of independent India, Bharat, this was done first time by Rahul Vishwanath Karad sir. Dear students, 21st century belongs to the youth and youth power. And just like in the government of India setup, Indian Parliament provides the space for leaders to ask questions. The Bharatiya Chhatra Sansad or Indian Student Parliament provides young leaders sitting in front of us the same platform like Parliament to raise questions, deliberate issues, and reach the solutions to the government. We have been doing for last so many years. So let's come together and begin journey to make our resounding voice reach up to those who can bring about change, and that is our leaders, that's you. Before I conclude, I would like to recite few lines for youth sitting in front today who will be leaders of tomorrow. मेरे दोस्तों, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। In short, what we need to change is our thoughts to bring the change that we always dreamt of or dream of. Let's enjoy the 3-day festival of democracy. Let's enjoy 3-day festival of youth leadership. Once again, a warm welcome to all the dignitaries who spared their valuable time to join youth leaders to guide them with their thoughts of wisdom, and to all student leaders and motivated nationalistic students coming from different parts of the country to this 13th Bharatiya Chhatra Sansad. You will have 3 wonderful days ahead, deliberating 6 sessions and 1 inaugural session and 1 valedictory. With this, I would stop
Wishing you all the best in Pune, dear students coming from all over India. Thank you, thank you, thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you very much for welcoming and setting the tone for 13th Bharatiya Chhatra Sansad. And now, as per the tradition of this platform, I would like to request the guest on this dais would be felicitated. First and foremost, I would like to request the Honorable Chairman of Karnataka Legislative Assembly, Shri Basavaraj Horati ji, and Shri UT Kadir Farid ji, Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, to join hands, felicitate and welcome Shri M. Venkaiah Naidu ji. Let's give a big round of applause, my friends, as we welcome the former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. A big round of applause. And this felicitation is happening at the hands of Honorable Chairman of Karnataka Legislative Assembly and Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, Shri Basavaraj Horati ji and Shri UT Kadir Farid ji. A big round of applause, a historical moment indeed. Thank you very much. I now request Shri Rahul V. Karat sir to felicitate and welcome Shri Basavaraj Horati ji, the Honorable Chairman of Karnataka Legislative Council. A big round of applause, my friends, for Shri Basavaraj Horati ji, Honorable Chairman of Karnataka Legislative Council. I request sir to kindly felicitate and welcome Shri Satish Mahana ji, Honorable Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly. A big round of applause, my friends, for Shri Satish Mahana ji, Honorable Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly. I request sir to kindly felicitate and welcome Shri UT Kadir Farid ji, Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly. A big round of applause, my friends. It's such a special moment that Speaker of Legislative Assembly and Legislative Council are present on this stage. I would now like to request sir to kindly felicitate and welcome Shri Girish Gautam ji, former Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly, Honorable Member of Legislative Assembly, Madhya Pradesh. A big round of applause, my friends, for Shri Girish Gautam ji. Thank you, sir. Thank you very much for your presence here today. I now request sir to kindly felicitate and welcome the world-renowned business advisor, author and thinker, Professor Ram Charan ji. A big round of applause, my friends, for Professor Ram Charan ji, a world-renowned personality on the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. Thank you everyone for your presence. My friends, this platform of Bharatiya Chhatra Sansad has been the seed for many such platforms. And my friends, I'm sure you would know, and I would like to reiterate, that one such movement that took birth just a few days back, the National Legislators Conference Bharat, is an avenue for the members of legislative assemblies and members of legislative councils across the nation to come together at one place and exchange ideas in this historic conference. The first edition of NLC Bharat took place in Mumbai from 15th to 17th June 2023. I would like to request my technical team if they can please show us some of the glimpses of first National Legislators Conference Bharat.
desire for the welfare of a person, this constitution paves a way for you to achieve your goal. जो आप सभी विधायकों की अपेक्षा थी, एक व्यूज शेयर करना, डाइवर्स व्यूज को सुनना और उन्हें जाकर अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना, मैं समझता हूँ ये राहुल कराड जी के इनिशिएटिव से निश्चित रूप से पूरी हुई है। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नई प्रैक्टिस अपनाई, उनका परिदर्शन, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी है। Undoubtedly, India is now being recognized and respected worldwide. These themes of your conference are vital strands of the work to enhance the effectiveness of all democratic legislatures. इस मंच पर की गई चर्चाओं और नए विचारों से जनता की भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। फॉर द सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस आप गोवा में आने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार है क्या? Whatever was said in India about thousands of years back is now being revealed by the entire world. देश भर से हिस्सा ले रहे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को अनंत शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। हमारे मंच के ऊपर सभी विधानसभा के स्पीकर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका मन से आभारी हूँ। मैं बहुत इमोशनल भी आज हो गया हूँ कि ये जो कल्पना बहुत 3-4-5 साल पहले मैंने बहुत सारे लीडर्स से बात किया था इसके बारे में, ये आज एक मैनिफेस्टेशन, एक इमेजिनेशन इस तरीके से यहाँ पे साकार हुआ। Let's give a big round of applause, my friends. Indeed, for the first time in the history of independent India, that such a platform was created, and none other than the efforts of Shri Rahul V. Karad brought together the 2,000 plus MLAs and MLCs from every state of Bharat. And indeed, it was the history that was made in the first National Legislators Conference. Once again, a big round of applause to Shri Rahul V. Karad sir and the entire National Legislators Conference for bringing it to reality. And it is now my honor and privilege to invite and request the person who handcrafted this platform of Bharatiya Chhatra Sansad more than a decade ago. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the founder convener of Bharatiya Chhatra Sansad, Shri Rahul V. Karad, the founder of MIT School of Government, the first school of Bharat for political leadership, and the creator of the platforms like NLC,
Bharatiya Chhatra Sansad, National Teachers Congress, National Women's Parliament, National Conference on Media and Journalism, Sarpanch Sansad, and many more. Once again, put your hands together and welcome with a round of applause, Shri Rahul V. Karat, sir. Thank you, Professor Bapat, for that wonderful introduction. Let me begin my speech. As usual, you all are aware, the Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi. I, behalf of our founder, most revered Dr. Vishwanath Karad sir, all the trustees of the institution, staff, students, our Vice Chancellor, let me welcome the chief guest of today's program, Honorable Shri Venkaiah Naidu Sahab, the man who fostered this idea of MIT School of Government, along with Shri T.N. Seshan ji and Advani ji and many other important people from our own state, Shri Prithviraj Chauhan ji, Sushil Kumar Shinde ji, a lot of people supported this idea, my dear friends, and I'm really happy and emotional also. Once again, you heard my speech in NLC just now, the Rashtriya Vidhayak Sammelan. 18 years of journey, we are entering into 19th year. And this very important historic convention, which was envisaged long back, but I think that for every idea, the time has to come. And the last year, in the month of June, under the banner of MIT School of Government and Bharatiya Chhatra Sansad, we organized this very historic convention in city of Mumbai. I must express my gratitude, little praise by Mr. Bapat, Professor Bapat, about little my efforts. But I must make a mention that Sumitra Mahajanji is not here. The Meera Kumarji, Shivraj Patilji and Manoj Joshiji, the 4 former speakers, my dear students, who are the patrons for this very idea of National Legislators Conference. They all supported this very cause and created the environment across party line in the country. So I must pay my respect and gratitude for all the 4 patrons. I also wish to express my gratitude for all the Vidhan Sabha speakers in our country. Today in particular, we have Uttar Pradesh Honorable Speaker Shri Satish Mahana Sahab, who is himself very qualified, competent, professional, and a very, I must say, professional politician, very modern politician. I welcome you, sir, for this support and overall development of NLC. I also wish to welcome Shri Horati Sahab, who is the chairman of Karnataka Legislative Assembly, another senior most, the council chairman and the senior leaders. So many times he was a minister and MLA in his lifetime, started his journey from ABVP and from the student movement. I have been to his house. Thank you, Horati Sahab, coming all the way and observing this very important Indian Students' Parliament. We have Honorable Speaker of Karnataka Assembly, Shri Khadir ji. Khadir ji, aapka bhi main yahan se man se swagat abhinandan karta hu. First time you are decorating this position, but when I saw you in the assembly, your maturity and the inclusiveness and the way of conduct is something which really motivates me and all of us as a country. Thank you, Shri Khadir Sahab. His father was also into politics. I request all of you to Google the background of these people, to come to this stature and the level at which they are today. There is a lot of efforts they have taken. We have Honorable Speaker, the former Speaker Girish Gautam Sahab is also sitting here on the dais, the Madhya Pradesh Assembly former Speaker. And I'm very happy that like a very senior person, when the first meeting, second meeting we conducted in city of Mumbai, he was there to, boost up the morale of me, my team. Thank you, Gautam Sahab, for your participation as well. My dear students, just for next 5 minutes, my speech is going to be 7 to 10 minutes. You all know that you all have taken quite efforts. The Bharatiya Chhatra Sansad is a platform, lost 12 editions, and before that through MIT School of Government. We have been championing this communication to come across the country that let us join the politics. The educated people must come in public life. Qualified, competent people must come in public life. We want aware citizens, we want educated citizens, we want a very ideal voter for our country.
How do we strengthen our democracy, my dear friends? Unless and until we, as academic institutions, we give this very fundamental thought that educated youth must come in public life, and keeping that spirit, this very journey last 18 years, all the politicians are corrupt, political parties are corrupt. Generally, this notion we keep hearing on the TV channels and the news media everywhere. But I must tell you in front of the most respected Shri Venkaiah Naidu ji, about whom I have a great respect, we all have a respect for his journey, that how and where we have come so far. 75 years of independence, great, our journey is great. But still, somewhere I think we need to create a solid environment in our country. What is the solution? How do we find the solution? Do we want to get ruled by good people or bad people? I mean to say our legislators. I must welcome, there are over 100 legislators sitting here in this audience. I don't know, everybody's, somewhere there was a separate block created, but I welcome all of you, my dear friends, that some of you participated in Mumbai also. So it is my duty to welcome all the respected honorable MLAs and MLCs of our country. Thank you so much for supporting this idea, and this very message here at the backdrop, my dear, it is a very clear message. Bharat ke uच्च शिक्षित विधायक. So message is, we identified, we have created different categories so far. The doctors, engineers as MLAs, singers, in different, some 50 different categories we have developed, and we wish to involve them. Our School of Law students, School of Economics students, they all are working together for research and various other areas. But I am trying to promote through this Bharatiya Chhatra Sansad that all the MLAs in the country should develop such platforms, the youth parliaments. I am very happy that 4 years before the government of India also, the youth ministry started the youth parliament, a similar platform. We have little role in that also, and many other such students and the youth in different parts of the country, they have started the National Youth Parliament, Students' Parliament. And this is basically the initiation from this very institution, MIT World Peace University, my dear friends. And I requested Honorable Birla ji ka bhi main yahan pe aaj smaran karna chahta hun ki Honorable Speaker of our Lok Sabha, that all our member of parliaments, our country has over 3.5 crore students taking education after 12th. We have so many colleges, so many schools, the biggest education system in the world, but not fully, I meant to say, the merit and so many other challenges are there, but we are evolving, my dear friends. So who will change this? Along with your professional polymer, petroleum, mechanical, civil, computer, any such degree program you are having, the liberal art, fine art, design, my feeling, my dear friends, that we have to have a social belongingness. That is the message of our beloved founder, Revered Dr. Vishwanath Karad, who created the world's biggest dome. Ultimately, the ideal democracy or any such order in the society, we are talking about the world peace. It's a very large and the big mission, what he has taken in his hand. And the World Peace Dome, the biggest dome of the world, he has established in Rajbagh here in city of Pune, which is a world wonder, which is a spiritually oriented scientific laboratory. Unification of science and spirituality alone, how it can bring peace to the mankind. That is the message he's trying to give. But here, my dear friends, we have to go step by step. So fundamentally, we as aware citizen and the strengthening of the democracy. So all the time, whenever people come to me, Venkaiah Naidu Sahab, what is the problem? First is the problem we have to identify, and what is the solution? So keeping that spirit, I requested all the speakers that every Vidhan Sabha should have one such leadership school, what we have at MIT School of Government here. A similar model. Last almost 18 years now, there are 6 people have become MLAs. All the respected MLAs, I must tell you, through the School of Government. People laughed on me in the year 2005 that how can there be a school which can educate the youngsters to get into public life. ऐसा राजनीति में पढ़ाई लेके कोई ऐसा राजनीति में थोड़ी आता है. लेकिन मेरी विनती है सभी लोगों से, तमिलनाडु से भी बहुत सारे एमएलए आए, बाकी भी राज्यों से सभी एमएलएज आए हैं. आपके सभी विधानसभाओं में इस तरीके का लीडरशिप स्कूल खोला जा सकता है. आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके जन्मदिन के ऊपर हो या और भी कोई अच्छा दिन आप जो आपको लगे, एक यूथ पार्लियामेंट का कंसेप्ट. सो वी हैव डेवलप्ड सम सिस्टम here through which we can support and guide that how this youth parliament, the similar fashion it can be organized.
And imagine if we sensitize this demographic dividend, the youth of our country, I think definitely we will propel the growth of our nation much, much faster, my dear friends. And this particular National Legislators Conference also, it gives a lot of hope, my dear friends. How it evolved, all the time, last 6 months, I am saying it is not just a blessing on me, what little praise was by Professor Bapat, but I think it is a blessing on our country, that Tamil Nadu and Gujarat and Maharashtra and all the MLAs working together beyond political party lines on the issues of national security, and there is some common minimum program, and can they come together? And I remember Shri Venkaiah Naidu Sahab said, Rahul, it is very challenging task. We have 100 political parties, we have 100 languages in our country. It is very, very, I need to speak to my colleagues, and that time he was a vice president of our country. And further, I had a chat with many other political leaders of other political parties also, and they said, Ki Rahul, this is an important idea. I myself was also little concerned that how and what way people will support. And I went to across the country, some 22 chief ministers, 22 opposition leaders in different parts. With the blessing of our founder, I could visit everywhere, and I said to everybody, I am not affiliated to any political party, my dear friends. I am an educationist, and I have been working with this school of government, the first school of the country to develop the future politicians. And some of them, they were aware, some of them, they were not aware. And that's how we could win their confidence. And so many, some 17 or 1800 MLAs participated for the first time in city of Mumbai. So I have a great hope. So I request Venkaiah Naidu Sahab and all the people in the authority here, particularly the speakers of various assembly, that can we have from Zilla Parishad to our municipalities and all such important government institutions, we should have the leadership schools, not just in Vidhan Sabhas. We have so many municipalities. We need, in our country, my dear students, you all should be aware, there are 30 lakhs elected representatives. I don't know whether you are aware, but you can see there are over 30 lakhs elected representatives from Panchayat level to the Lok Sabha. So there are enormous opportunities, and in the recent days, last 10 years, I see most qualified, competent people serving somewhere in United States and some other developing countries. They are going back to their villages and want to contest the election for sarpanches. They want to think about the social transformation, upliftment of the people. Like in the Swades movie, Shah Rukh Khan goes to village and he wants to do something as an engineer. In a similar manner, yesterday when I was having a talk with Satish Mahanaji, he said, Rahul, politics is in every aspect. And it is true. You know, this is an institution, but where we have our own employees and they are, you know, the teachers, they are educating you, my dear students. But imagine the city, imagine the whole state, 12 crore, 13 crore people of Maharashtra and the 140 crore machinery, 140 crore people of the whole country. How the governance happen everywhere, every third, the collector office or from grassroots to upper level, if we see everywhere, there is a role of politics. And we are talking about transformation of politics, the good politics. We want most active people, committed, honest people to come in public life. And if we really want to do this, my dear friends, first of all, we ourselves have to say कि राजनीति अच्छी चीज़ है, राजनीति बुरी नहीं है. राजनीति में कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग बुरे हैं ये मानना गलत है. ये बात हम सबके जहन में होना चाहिए. हम सटायर देखते हैं, पॉलिटिकल काफ़ी सारे मूवीज़ में भी देखते हैं कि देयर इज़ अ so much of criticism on public life. और हमने एक प्रतिमा बनाई है. Some of the people, when I come sometime in the attire of kurta and pajama here at the institution, लोग बोलते हैं ये कपड़े आप पहन के ये सर ये रिस्पेक्टफुल नहीं लगता है. मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कुर्ता और पायजामा जो हमारा बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे पहने, तो मुझे बुरा लगता है कि इस कपड़े में क्या मतलब, ये कपड़ा तो हमारा भारत का मूल कपड़ा है. बहुत सारे लोग यहाँ वेष्टी भी पहन के आए हैं. तो हमें इस तरीके से सोचने की बात है मेरे दोस्तों, और ये सब बदलने के लिए भारतीय छात्र संसद और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण है. मैं राजनीति के आध्यात्मिकरण के बारे में भी बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि राजनीति का आध्यात्मिकरण, हाउ डू वी रियली, गोखले साहब ने, महात्मा गांधी जी के गुरु, उन्होंने बोला था स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. हमें राजनीति को बदलना है तो अध्यात्म की बात, जो विज्ञान और अध्यात्म की भी जैसे बात होती है वैसे अध्यात्म और पॉलिटिक्स की भी बात होनी चाहिए. और उसी तरीके से मैं कल में गिरीश गौतम साहब को भी मेरी इवनिंग में बात हो रही थी. मैं बोला सर, हमारा जैसा उम्र बढ़ता है तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरी मन की पवित्रता, हम थोड़ा मैच्योर होते हैं, समाज के धक्के खाते हैं तो हम वी बिकम लिटिल रूथलेस. हाउ डू वी रियली कीप आवर सेंसिटिविटी अलाइव?
And it is very, very challenging when you go to the tallest positions. I think it is really crucial that people really, when they decorate such positions, they have the authority, they have the power to change the society, to transform the society. They should have a very right mind. And from where the right mind will come, so for that, spiritualization of politics is the most fundamental thing. How do we really think? Can be there some syllabus from the Vidhan Sabhas, all the respected Vidhan Sabha speakers, Satish Mahana Sahab, Khadir ji, Rajniti ka adhyay, how do we really, can we have some syllabus in the Vidhan Sabhas? And NLC can play little role. You are a government, you are the authority, you have a power, and we as active citizen and the civil society, और बहुत सारे लोगों ने बोला सिविल सोसाइटी से ऐसे आवाज़ आगे आने चाहिए और इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पूरे भारत में बनने चाहिए और ये पब्लिक और प्राइवेट की तरफ कई बार होता है, ये प्राइवेट एंड सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. एनजीओज दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी ने इसमें जब तक एक्टिव तरीके से हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा वोटर जब तक जगेगा नहीं. वोटर जगाना है तो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना पड़ेगा. एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छी बनानी है तो हम सब अर्बन सोसाइटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम आगे चल के आप सब प्रोफेशनल्स बनेंगे. तो ये हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए बच्चों. तो ऐसे बहुत सारे विषय मैं यहाँ पे टच अपॉन कर रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि एक एजुकेशन सेंटर, एक यूनिवर्सिटी से इस तरीके का विचार आगे आके देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय छात्र संसद आने वाले समय में इसमें रोल प्ले करेगा. ये विश्वास आपके सामने यहाँ पे रखते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. फिर से एक बार ऑनरेबल श्री वेंकैया नायडू साहब का स्वागत और सभी स्टूडेंट्स का शुभकामनाएं. आपके सबके भाषण सुनने के लिए हम बहुत क्यूरियस है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much. Once again, a big round of applause for Shri Rahul V. Karat, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your thoughts and making this platform a reality. Thank you. Thank you very much. My friends, it is indeed my honor and privilege to request the chief guest of this session, Shri M. Venkaiah Naidu ji, to kindly address the gathering. But before I do that, I would like to request my technical team if they can please relay a small film made on life and work of former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. Shri Muppavarpu Venkaiah Naidu, a seasoned leader of the Bharatiya Janata Party, held the distinguished position of the 13th Vice President of India from 2017 to 2022. Born into a family of patriots, he embarked on a remarkable political journey spanning nearly 5 decades. After completing his education at BR College, Nellore, and obtaining a law degree from the Andhra University, Visakhapatnam, Shri Venkaiah Naidu engaged in student politics with the ABVP. During the national emergency, Shri Venkaiah Naidu was imprisoned by the authorities for his active participation in the Chhatra Sansad Samiti of Andhra Pradesh. Shri Naidu was elected twice as an MLA from the Andhra Pradesh Legislative Assembly from the Udayagiri constituency. In 1998, he became a member of the Rajya Sabha from Karnataka and was re-elected in 2004, 2010 and 2016. He became the national president of the Bharatiya Janata Party in 2002. Post the NDA victory in the 1999 general elections, Shri Venkaiah Naidu served as the Union Cabinet Minister for the Rural Development in Shri Atal Bihari Vajpayee's government. Following the BJP's triumph in the 2014 general elections, he assumed key roles such as Minister for Urban Development, Parliamentary Affairs, Housing and Urban Poverty Alleviation, and Information and Broadcasting in the Modi cabinet. Beyond politics, Shri Venkaiah Naidu is associated with the Swarna Bharat Trust, a social service organization in Nellore that he founded. The trust runs a school for underprivileged, orphaned, and special needs children and conducts self-employment training programs, particularly focused on empowering women and youth. Let us warmly welcome Shri Muppavarpu Venkaiah Naidu. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, my friends, the Honorable former Vice President of India and Chief Guest of this session, Shri M. Venkaiah Naidu ji. A huge round of applause.
सर्वांना नमस्कार नमस्कार MIT द्वारा आयोजित भारतीय छात्र संसदेत सहभागी होताना मला खूप आनंद होता आहे. श्री विश्वनाथ करात जी, the man with a vision who has developed these institutions and combined service, spirituality, education, social service all together. Professor Ram Charanji, world-renowned business advisor, author and thinker. Dr. R.M. Chitnis ji, honorable speakers, Sri Satish Mahana, one of the senior most legislator with enough experience and who is the speaker of the largest state in the country, Uttar Pradesh, Sri Basavaraj Bharati, another tall personality from the south, Karnataka, Sri Girish Gautamji, Sri U.T. Kader Faridji, and then legislators who have come from different parts of the country, from the south, from the north, from the east and west and northeast. And my youngsters, of this university who are all ably assisting this conference. My dear friends, brothers and sisters, people say politics is a profession. I don't agree. Politics is a mission for the sake of the nation, and we must serve it with passion. Mission with passion for the sake of the nation, without expecting commission, giving any omission, or giving any remission. We must have the passion to serve the nation. Nation means not the geographical boundary of India. Bharat. Nation means 140 crore people. All together, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. Indians, Bharatiyas, we are all one. We must have that feeling and we must try to serve the downtrodden, the less fortunate, remote people, rural people, the tribal people, and also must take care of to see that the women are also given equal opportunity. It is our duty. We must also start our daily activity by respecting the nature, culture, together for better future. Nature, culture, together for better future. So keep in touch with the nature, love and live with the nature. Then you will have a bright future. My dear friends, India is on the move. Once upon a time, India was known as Vishwaguru. Now again an opportunity has come in between because of the foreign rule, the slavery and the slavist mentality. We were let down. Now again opportunity has come, 75th year. Now India is on the move. The entire world is looking to India. India is being respected, recognized everywhere in every field. Our boys and girls, our youngsters, they are doing wonders. Our people are occupying important positions in the multinational companies across the globe. Out of the 100 top world companies, 50 of them are led by Indians, Bharatiyas, our own brothers. We must feel happy.
We have opportunities, but we also have challenges. Even today, after 75 years, 18% of the people are living below poverty line. Around 18-20% of the people are illiterate. They can't read and write. And the women who constitute 50% of the population, they do not have adequate representation. And in certain parts, certain areas, caste discrimination, upper caste, lower caste. These are all the challenges. We have economic disparities. We have an urban-rural divide. So we must all come together to bridge this gap, to face these challenges. My dear friends, you are all legislators, elected by the people, selected by political parties. The legislature of the country, parliament, is like the biggest temple of democracy. Democracy, sorry. Temple of democracy. It is very sacred. How do you strengthen democracy? Everybody has to do his or her job. Someone asked me, sir, what is Deshabhakti? What is patriotism? I said, patriotism is very simple. Do your duty. That is patriotism. बच्चे ने कहा, sir, इतना simple है. मैंने कहा, you do your duty. Everybody does his duty. That is patriotism. And then share and care is the core of Indian philosophy. Share and care. That is our culture. One boy asked me, sir, what is the culture? Culture is a way of life. I am not talking of religion. Religion is personal. I am talking of the culture, age-old culture, which is given by our forefathers, the great people. We must follow the culture and pass it on to the next generation. Then the boy asked me, what is culture? I said, it's a way of life. He said, sir, I am not able to understand. Can you explain in one word or give a small example? I said, if you have a roti, bread, if you eat your roti, that is prakriti, nature. If you snatch the bread from other person and eat it, that is vikruti. And if you have a bread and you share it with the next person, another person, that is called a samskruti, Bharatiya Samskruti, Hindu Samskruti. Share and care is the core of Indian philosophy. So we must all see to it that we care for the less fortunate. The legislators, they should be role models to the people. People will be looking to parliament, to assembly with respect. They will be watching television debates. So it is our duty to raise up to the level, maintain dignity, decorum and decency, and contribute to the debates. I always say, I quote late President Pranab Mukherjee, discuss, debate and decide, do not disrupt. This is very, very important. Discuss, debate, decide, do not disrupt. Disruption, obstruction, destruction is not required, construction is required now. For that we need to have a positive mind. Freedom movement, we were working against Britishers, but now we are a free India. So there is no need to have scope for negativism. We must all be positive. Positive is a good word, except during the COVID period. COVID period, of course, you can't expect people to have positive this thing. But now in free India, we must be constructive, not obstructive or destructive. We must contribute ourselves for the proper conduction of the legislature, assembly or council. I am not talking of this party or that party, all parties together. We must all come together like one party, national party in the interest of the nation. Yes, you be in your party. I want people to be in their party. But when we come together to make legislations, we are one party, that is nation party. We are not enemies.
We are rivals, different parties in different states. Congress or BJP, or Communist, or DMK or ADMK, or Shiv Sena, this group or that group. We are all one group, that is the India group, that is Bharat group. That has to be kept in mind. Politics has to be kept aside. Because as I told you, we must come together to strengthen the nation, to have better infrastructure, to have better facilities in the rural areas, to see that the poorest of the poor, they are taken care. Antyodaya, taking care of the poorest of the poor, serving the last man in queue. That should be our priority in democracy. So for that, we must come prepared to assemblies. We must learn. I can tell you, I am from a village. My parents were not educated. I did not go to a convent. I went to a village school. I studied in Telugu medium, my own medium. But still, from school to college to university to assembly to parliament to the ministry to vice president, I have gone up to all these positions. That is the beauty of this democracy. That is the beauty of this democracy. If you work hard, you will get an opportunity. We must all join together to strengthen the country, make it strong, make it stable, make it peaceful. Because peace is the prerequisite for progress. If you have tension, you cannot pay attention. And you will be doing only pretension. And you cannot have retention of those ideas. So we should not have tension. We must all work together towards the peace. And we, legislators, parliamentarians, we must set example to others. Children watching the television channel or elders seeing in the village, panchayat, what is happening in parliament and assembly. Sometimes they get disillusioned. And members went to the well of the house, tear off the papers, break down the mic. Sometimes it happens, unfortunately. I can understand. Sometimes you become angry. You are agitated. But agitate within democratic means. Protest from your seat. Someone told me, sir, you are saying it's okay, but the government is not caring for our suggestions. Your duty is talk out or walk out. No breakout. This has to be understood by one and all. Either you talk out or walk out. There should not be any breakout because it will lead to all out of democracy. This is an important thing. Another thing, let the government propose. Let the opposition oppose. And let the House dispose. Finally, House, the majority. You have to go by majority numbers. So we must have tolerance towards the other's views. Tolerance towards other views. And you must be tolerant towards the mandate of the people. That is also important because people have given a mandate to a certain person, certain party. You have the right to criticize, to protest, organize rallies, but everything has to be peaceful. If you destroy public property, you are destroying yourself because we are a free country, independent country. Setting fire to railway station, setting fire to bus and all, ultimately it will affect people. The charges will go up. The prices will go up. Keeping that in mind, we should not involve in violence at all. Neither violence nor silence. What? चुप बैठे, आराम से बैठे, जो भी कर रहे देखते रहे, ये भी नहीं होना चाहिए. सरकार गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको रोकना है और बताना है भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं. विरोध करना है, बिल्कुल विरोध भी करो, बट फाइनली वोटिंग जो होगा उसी हिसाब से हम लोग आगे जाना पड़ेगा. My dear youngsters and particularly legislators, I see number of youngsters from various fields. Rahul was telling there are doctors, actors, tractor running farmers, teachers, professors, all of them, different people. They are part of the legislature in parliament and assembly. I was chairman of the parliament, Rajya Sabha, upper house. And I used to see sometimes the new members
They used to make beautiful, wonderful speeches. They used to come prepared. So there are good people. It is not that our MLAs or MPs are creating garata or disturbance. There are very good people. Go to library, read what are the speeches made by Parliament, eminent parliamentarians, Nath Pai, Vajpayee, Pilu Modi, Professor N.G. Ranga, Madhu Dandavate, N.G. Gore, Indrajit Gupta, Jyotirmay Basu, from different parties, L.K. Advani, different parties, different leaders. They made powerful speeches. Go through the speeches, understand the spirit, and then try to follow the leaders. Make a good contribution. Make an impact on the government and make an impact on the people. If the government doesn't listen, it is their fate. People are listening to you and they will be supporting you. Keep that in mind, my dear youngsters, and see to it that we respect each other. Respect each other. Because, as I told you, we are not enemies. And what is required is, we must all contribute to the strengthening of democracy. How can you strengthen democracy? By effectively allowing parliamentary legislative systems to function. And the media also has a greater responsibility. They should not report only tension. They must report and pay attention to the people who made good speeches also. I remember when I went to Parliament early days, I prepared myself, went to library, studied, and spoke on my favorite subject, agriculture, which is our basic culture. Spoke for 52 minutes. All parties, including Professor M.S. Swaminathan, they all, even Charaji, everybody complimented me. But next day, to my surprise, there is no mention of my speech in the media. Venkaiah Naidu eloquently spoke about agriculture, only 2 lines. If you snatch the mic, if you tear the papers, if you challenge the other man, if you unfold your shirt, you are in the news. I asked media people, what is this? They said, sir, constructive thing is not a news, obstructive thing is a news. If a dog bites a man, it is not a news. If a man bites a dog, then it is a news. This is what the press people told me. That is the tendency. No, we should change this tendency. Media also should seriously think. Are they doing service to the nation, to the cause of the people, by only reporting the highlights of disturbance, not the constructive part of the debate? The media should think about it. The presiding officers of the parliament, of the legislature, they must give opportunity to all parties, give opportunity to hear all the views, and then allow the discussion to move on. Some friends told me, sir, sometimes in parliament, even when I was chairman, bills are passed in din. Din means disturbance. I said, the solution lies with you. They said, what is the solution, sir? I said, don't create a din and don't pass a bill. Din, you create din, you don't want any bill. If you continue the din for days and you don't want any legislation to be made, the interest of the public will be affected. This has to be kept in mind by all people. And my suggestion to politicians, to youngsters across the country is join politics. Whatever party you like, be constructive, be attentive, be disciplined, and don't change parties frequently. Nowadays, very difficult to identify, understand which person is in which party. I go around the country, I take the names of the people and mention their party. They say, sir, no, he is not in that party, sir, he is in other party. So it's like railway station and bus stand. You have a signboard saying so-and-so train at so-and-so time on so-and-so platform. Similarly, I think now people are talking about having a signboard in every village, so-and-so leader in so-and-so party, as on today in the morning hours. By evening, what will happen, we don't know. This is a very bad thing for democracy, shameful. Politics must be with conviction. And if you are there in one party,
You cannot come into power, that's not correct. When I joined politics, I can tell you I am from South. When I joined politics, many elders told me, you are joining that party, it will never come to power. And one person told me, sir, it's a town people party, it's an educated party. And at the end he told me it's a vegetarian party. When I was supposed to join politics. And I can tell you, I used to work hard. I used to write on walls about the party. I used to make announcement about Atal Bihari Vajpayee arrival to my town. आज शाम को आम सभा है कोऑपरेटिव मैदान में तरुण हृदय सम्राट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आने वाले हैं, आप सब बता रही है, ऐसा अनाउंस करते थे। एक झटका में बैठ के झटका टांगा। मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण के बारे में अनाउंस करने वाले लड़का एक दिन वही अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के बीच में बैठ के सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं। हो गया, बिकॉज कंटिन्यूड विथ कन्विक्शन, डिड नॉट चेंज पार्टीज or colors, worked hard and tried to learn from elders. That is the reason for my success of occupying all these positions. So my dear friends, youngsters in politics, stick to the ideology. If the leader becomes arrogant, dictator, then what to do? In that case, discuss within the party, majority people, they should take a decision. That is the only way out. Otherwise, people will lose respect in politicians. Then another thing is, be honest. There's an impression, politicians means corrupt. Not all politicians are corrupt. There are many, many honest politicians. But they are not covered by the media. Only dishonest people are covered. So try to be honest and try to be truthful and faithful so that people will admire you, they will elect you time and again. This is my advice to the budding politicians. Reason the politics, fight the corruption, expose the corruption, highlight the atrocities. You will be also appreciated by the people. This is my own experience. I am telling you, please follow this experience. Visit the constituency regularly. Be among the people. Either you must be in parliament or assembly, or you must be in your constituency. There is no way you can be somewhere and then the posters are put up. So-and-so MP missing, so-and-so MLA missing. Nowadays it became a fashion to put the posters also. That situation should never be allowed. And then, my dear friends, the ancient culture and our traditions, they should all be respected. That's why I always say, go back to your roots. Go back to your roots. The traditions which are given by your forefathers, and try to pass on them to your younger generation, because they are the future of the country. That also should be our duty. Swami Vivekananda has observed during his famous address in the World Parliament of Religions in Chicago, quote, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. This is what Swami Vivekananda has said. So we should not get involved. My religion is great, that religion is this thing, secondary. All religions, every religion has got certain great things. They are great. We should be more worried about culture, about conduct. That is my advice to all the youngsters. You inform yourself by reading about the sacrifice made by people, by Bhagat Singh, by Rajguru, by Sukhdev, by Mahatma Gandhi, by Subhash Chandra Bose, by Sardar Vallabhbhai Patel. There is no dearth of leaders. Galaxy of leaders were there. You go through their life, you will get inspiration. You will get inspiration, and then you will be able to follow a good path. This is my advice to all the young legislators.
We are at a critical inflection point. It is one of the leading players in the world stage, India. Certain countries, Western countries, they are not able to digest the growth of India. They are not able to digest the growth of India. India is becoming strong again. Yes, we want to become strong, stable, powerful nation. We want to become an Atma Nirbhara Bharat, not to attack us. Indian civilization, we never attacked any country, any time. We were the richest nation once upon a time. 26% of the world GDP was from India once upon a time. But we never attacked any country. Small countries, England, Portuguese, French, these people, they attacked different countries. They came and attacked us also, ruled us, ruined us. To some extent, looted and cheated us also. We must come out of that colonial mindset. We must see to it that we become strong in order to help others. Sarve jana sukhina bhavantu, vasudaika kutumbakam. That is our philosophy. We want to become strong to protect others, not to occupy others. This is not Indian culture, this is not Hindu culture, this is not Bharatiya Soch. Isliye, my friends, we are the 5th largest major economy in the world. We are, in short, going to become a 3rd largest economy in the world. And that fruits of development must be passed on to the down below, to all the people. Ultimately, what is the aim? Development is for happiness. Development is for comfort. But ultimately, development must be oriented towards happiness. Happiness. People must be happy. World must be happy. If you are peaceful, then you will become happy. If you have infrastructure, then you will become happy. If you create wealth, then you will become happy. Without creating wealth, without distributing wealth, you cannot be happy. Keep this in mind, my dear youngsters. My suggestion is 50% of our population is below 35 years. Below 35 years. We have demographic dividend. If we youngsters, we all work with dedication and determination and follow constructive methods, we will have a bright future. India will again, worldwide India will be the #1 country, ideal country for the world to follow. Keep this in mind, try to work hard and then enrich your understanding. Always I suggest, select and elect leaders. Basis of the 4 C's, character, caliber, capacity and conduct. That is what is required for a leader, for an MLA, for an MP. But now some people, some parties have taken shortcut methods. They forgot the original 4 C's, character, caliber, capacity and conduct. The shortcut route is caste. Caste, criminality, cash and community. The original 4 C's are replaced by these 4 C's. That should not be allowed to be public discourse. People must elect and select people with character, caliber, capacity and conduct, with dedication, determination and devotion. And people also should not promote dynasty. Dynasty is not good in democracy. Dynasty means you promote your son, you promote your daughter, you promote your daughter-in-law, you promote your brother-in-law. Then what about the people? If a son is sincere, honest, hard-working, let him come up in politics, no problem at all. There is no bar. But they should not be parachuted. They should not be helicopter dropped leader. My dear friends, the Bharat, India, as I told you, is on the path and the cusp of becoming a very strong country. The Prime Minister gave a 3-line advice: reform, perform and transform. Reform, perform and transform. Transformation for the betterment of the nation. Transformation of the individual. That is what is required. So let us transform ourselves and come out with new ideas. We are having now digital technology is good.
artificial intelligence is good, but we must see to it that our own intelligence is used. Now, nowadays, lot of boys and girls, they are taking to Google. They are not applying their mind. Google is good, but Google से ज़्यादा गुरु महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. Google को रिपेयर करे तो गुरु को बुलाना पड़ेगा. So gurus always should be revered and respected. That is my advice to all of you. ये ऐसा हो गया एक बीमारी, कुछ बच्चे लोग सोचना बंद किया आजकल. अरे के लिए देख रहा, अरे भाई यहाँ पुणे से मुंबई कितना दूर है, गूगल. ऐसा होके कुछ दिन के बाद, अरे आपका पत्नी का नाम क्या है, गूगल, सर्च द गूगल. ये परिस्थिति बनने नहीं देना. दिस इज नॉट गुड. And using too much electronic goods is bad for health. My advice is get up by 6 o'clock, complete your work by 6 o'clock, and then rest and relax. But people are spending time up to 10 o'clock, 11 o'clock, cinema, TV, all these things, and they have sleepless nights. And people say, sir, I was busy. I asked one boy, what were you busy? Please write down. He said, I was busy. मैंने कहा बिजी लिखने से क्या हुई, क्या किया आपने सुबह से शाम तक. What you have done from morning to evening, write down. He has nothing to write down. ऐसी बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं कुछ लोग. इसलिए मेरा सजेशन यह है, यूथ को, यंगस्टर्स को, spend time meaningfully. Spend time with your grandfather. He is a great teacher. Spend time with your grandmother. Spend time with your parents. They are responsible for your beautiful future. They are first gurus. And spend time with the nature. Sun, not your sun, sun. Moon, water, plants. Spend time with them, you will get positive ideas. This is how youth can shape their future in a better manner. And then complete the work. Eat good food. Do exercise in the morning. Morning, some exercise, yoga, running, jogging, badminton. I am 75 now. I play badminton daily in the morning. 75 years. That's why I am able to go around the country, meet the people, meeting people, greeting people, talking with people, walking with the people, spending time with the people. That is my favorite pastime. Even after I completed my tenure as vice president, still I am going around. The reason is I see future in the youngsters. I would like to meet them. I would like to greet them. I would like to take ideas from you, better ideas, and pass on my thoughts to you. That is the purpose of my going around. There is no question of rest. Someone asked me, what about rest, sir? You have worked for all these years. I said, rest can be only during arrest. If you are arrested during emergency, that was the best period for rest. Otherwise, there is no scope for rest. Get up early, do exercise. I am not forcing you to do yoga only. One boy told me, sir, people say yoga is good, but yoga is a Modi party. I said, yoga is not for Modi. It is for your body. Do some exercise. If you are physically fit, you will be mentally alert. Physically fit, then mentally you will be alert. Then eat proper food. Avoid junk food. You may be surprised, Venkaiah Naidu ji, former Vice President of India, senior person, coming and giving lecture to us on small items like exercise and food. They are very basic requirements for a strong nation. Eat proper food. There are thousands of varieties in India. Eat Indian food, don't follow the West. Because some people feel that West is the best. No. We have our own. Our grandparents have given us so many varieties. We need to eat cooked food. We need to eat cooked food, protein food. Now there is a lot of debate going on about the rice. And need to go for other important thing is ragi, jowar, bajra. They are more proteinous. And we are wasting our energies by removing all polish on the rice and eating waste rice.
Keep this in mind, there are small arenas. And some boys told me, sir, you are saying eat cooked food. But now it is available, sir. Tomato, Zomato. Zomato, Sijji, Danjo. You just order, they'll get. They are not good for your health. Pizza, burger may be good for them, but not for us. Keep this in mind. Eat homegrown food, eat homemade food, and eat hot food, and eat judiciously, properly. That is my advice to all the youngsters. Some boys, they say, sir, food is instantly available, sir. I said, if you eat instant food, you will be having constant disease. Understand this. Instant food means constant disease. This food cannot be instant. It has to be cooked properly. This has to be understood. And some people are carried by names. One boy told me, sir, you are saying eat our own palav, biryani, but it is nowadays fashion is chicken 65. Your age is not 25 even, and you want to become 65. Names, branding, they are trying to influence the youngsters. We should not be influenced by it. We should, as I told you, spend more time with your parents. You will get proper guidance. Respect your teacher, respect your institution where you studied, which gave you the basic knowledge about various things in life. And these universities should be places of intellectual interaction and must embrace every new idea with open arms. The new educational policy is a wonderful document. All the education institutions across the country, they should follow the new education policy. There is no politics in it. It is about our own tradition, our own culture, way of life. Keep that in mind. In fact, I feel the Ramayana, Bhagavad Gita, they should be part of the educational curriculum to give the moral character to the youngsters. I am not worried if somebody is going to criticize. Let them criticize. The Ramayana, the Mahabharata, they are great epics. You learn so many things from them. The country is going to rejoice on 22nd January with Ayodhya, Lord Rama's temple being open. Why? Rama is an ideal ruler, ideal human being, not God. Ideal human being, ideal ruler. That's why Mahatma Gandhi said, Rama Rajya. Rama Raj. So keep that in mind. See to it that proper changes are brought in, and you also try to improve your own intelligence. IT, good. IT and duty combined together, it will be beauty. IT, duty becomes beauty, and if you follow it, you will become mighty. This has to be understood by all. This is my advice to all of you, my dear youngsters. I don't want to take much of your time. I am very happy to be here and to inaugurate this National Young Leaders Parliament. And I would like to compliment Rahul Karad for taking this initiative and sustaining this momentum with a lot of energy, contacting people and leaders across the country, making arrangements is not an easy thing. It's not an easy thing. It's a Herculean task, but he's doing it with passion. As I told you, not for commission. He's taking it as a mission. Let us all join together in that mission to build a strong nation where there is no poverty, where there is no illiteracy, where there is no discrimination, where there is no divide, where there are no atrocities. Such a powerful Bharat बनाने में हम सब लोग भागीदारी होना चाहिए. यही मेरा सुझाव है आप सब लोगों को. And my dear friends, I wish you all the best. Wish you a healthy, good future. God bless you. Namaskar. Jai Hind. Big round of applause, my friends, for Shri M. Venkaiah Naidu ji. And yes, indeed, a standing ovation. Sir, kindly accept this standing ovation from everyone in the audience. A big round of applause, my friends. Absolutely spellbound, and his words of wisdom and advice to the younger generation. Thank you, sir. Thank you very much. And as he rightly said towards the end of his address,
that we will have to work hard, and I would like to quote here, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। Thank you very much, my friends, and we have one such personality here present with us on stage, whose zindagi ek misal ban chuki hai. His every step creates history and sets the path for future. My friends, I'm talking about none other than Shri Rahul V. Karad. The journey that began in 2005 with the establishment of MIT School of Government has been nothing short of transformative. Bharatiya Chhatra Sansad was a pivotal step in this journey, further involving the youth in democratic processes. However, the crowning achievement in this series of endeavors is National Legislators Conference Bharat. This institution, for the first time in the history of 75 years of independent India, achieved the momentous feat by bringing together the 2,000 legislators on a single platform. In recognition of Shri Rahul Karad sir's unwavering commitment and his role in initiating this groundbreaking unification, our patrons, the 4 former speakers of Lok Sabha and the committee have unanimously decided to honor his visionary leadership. I invite and request the former Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, along with the 4 speakers of Legislative Assembly and Legislative Councils to come together and celebrate this moment and give a citation of honor to Shri Rahul V. Karad, as this moment is not just the recognition of his achievements, but a celebration of the profound impact he has made in engaging the youth in the political processes of our nation. Please give a big round of applause to Shri Rahul V. Karad sir as I read the citation of honor. This citation of honor is presented to you for conceiving, conceptualizing, and successfully initiating National Legislators Conference, and for your ongoing and untiring efforts to further strengthen and institutionalize the historic mission, for your farsightedness, creating an exclusive platform for the esteemed legislators for collaboration, idea exchange, and capacity building, in the appreciation of your dedication to the ideas of robust democracy, good governance, and non-partisan endeavors, this citation of honor is presented on behalf of the honorable patrons and members of the Advisory Council of the National Legislators Conference at the august hands of Honorable Shri M. Venkaiah Naidu ji, the former Vice President of Bharat, on this, the 10th day of January 2024 in Pune, by Srimati Sumitra Mahajan, Shri Shivraj Patil, Dr. Meera Kumar, and Dr. Manohar Joshi, all former speakers of Lok Sabha. Please put your hands together once again and give a big round of applause to Shri Rahul V. Karad. Thank you very much everyone for joining hands for this special moment for all of us. My friends, we would like to continue this inaugural ceremony, and this is the moment where the stage becomes open for the student leaders of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Today we have on stage Shubham Chauhan from Maharashtra, who would like to express his mind to this inaugural session. I request Shubham Chauhan to kindly address the gathering. Please put your hands together and welcome with a round of applause Shubham Chauhan from Maharashtra. आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के फंदे पर था अशफाक खुशी से झूमा था, वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अछप कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी।
भारत माँ पर कोई दरिंदा, भारत माँ पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा, तब तब आगे आएगा. महाराष्ट्राचे कुलदैवत छत्रपति शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, मौजूद सभी गुरुजनों को और जोश और उत्साह से भरे युवाओं के इस सैलाब को शुभम चौहान की ओर से सादर प्रणाम. ये मेरी खुशकिस्मती है कि BCS के इस भव्य मंच पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है. स्वामी विवेकानंद जी in his words quotes that, "Give me 100 energetic young men and I shall transform the whole nation." एक युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है, फिर चाहे वो देश का कोई भी पहलू हो, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या सामाजिक जो भी हो, जहां भी युवाओं ने अपना योगदान दिया वहां बदलाव, क्रांति और सफलता मिलना निश्चित है. नए विचार धारण करने की क्षमता, समाज के लोगों को प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता और कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति, ये वरदान है जो हम युवाओं को प्राप्त हुए और इसी वरदान से हम भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं. पर हम युवाओं के साथ एक समस्या है, पता है क्या? हम युवाओं ने अपना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वोटिंग तक सीमित करके रख दिया है, जबकि पॉलिसी मेकिंग, लीडरशिप, इन स्थानों पर युवाओं को स्थापित होना है. जी, तो इन स्थानों पर युवाओं को स्थापित होना है. और याद रखिए, हमें 2 E को साथ लेकर चलना है, एक्सपीरियंस और एनर्जी, अनुभव और शक्ति. जब इन 2 चीजों का संगम होता है तभी जन्म लेते हैं एक उन्नत राष्ट्र और महान साम्राज्य, जैसे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, जिजाऊ माता और छत्रपति शिवाजी महाराज. और हमारे सामने जीती जागती मिसाल है डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर, एक्सपीरियंस, अनुभव, और राहुल कराड़ सर, एनर्जी, जिनकी बदौलत ये क्रांतिकारी महोत्सव हो पा रहा है. तो अनुभव और शक्ति को साथ चलना होगा. बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद. Heartiest congratulations, Shubham, and I now request Shri UT Khadir Farid ji to kindly felicitate Shubham Chauhan. Heartiest congratulations, Shubham, and I request Bhavik Gondalia to get ready. A big round of applause, my friends, for Shubham Chauhan. And now we have, all the way from the state of Gujarat, Bhavik Gondalia, who's going to address the gathering. Over to you, Bhavik. है वीर का प्रमाण तू, है वीर का प्रमाण तू, ओठ जरा दहाड़ तू, पुकारता है राष्ट्रीय, पुकारती माँ भारती. अब नीति का अवलंब ले, हर भीति को अब त्याग तू, जाग तू, जाग तू, है वीर का प्रमाण तू, ओठ जरा दहाड़ तू. नमस्कार. मंचस्थ सभी महानुभावों को एवं मेरे समक्ष उपस्थित सभी युवा नेताओं को प्रणाम. मैं आज, हमारा देश है उन नौजवानों का देश है जिसमें 65% हिस्सा गर्म खून से, सराबोर से युवाओं का है, लेकिन उनकी मौजूदा संसद में भागीदारी है केवल 12% तक सीमित है. आज मुझे ताज्जुब होता है कि जब इस देश की औसत उम्र 29 साल हो, लेकिन इस देश के नेता की औसत उम्र जब 65 साल निकल के आती है तो वे ताज्जुब खड़ा करता है, बड़ा प्रश्न खड़ा करता है इस देश की राजनीतिक परिस्थिति पे. और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री राहुल कराड़ जी का और विश्वनाथ कराड़ जी का, जो इन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं. भारतीय छात्र संसद व MIT SOG जैसे मंच से जो राजनेताओं को तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें मंच दे रहे हैं. साथियों, हमें समझना होगा कि हम क्यों जोर दे रहे हैं युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, क्योंकि वो युवा ही होता है जो किसी भी देश व समाज में बदलाव का मुख्य वाहक होता है. इतिहास गवाह रहा है कि आज तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हो, चाहे वो राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या फिर वैज्ञानिक हो, उनके मुख्य वाहक युवा ही रहे हैं. और इसीलिए राजनीति में युवाओं की सहभागिता विकल्प नहीं,
किंतु आवश्यकता हो चली है। साथियों, हमें समझना होगा कि ये जन्मभूमि रही है भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की। तो फिर क्यों आज इस देश का युवा है वो राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहा है? क्यों युवा अपॉलिटिकल हो चुका है? तो जवाब है कि युवाओं को छात्र नेतृत्व का खात्मा हो चुका है, चुनावों में बाहुबली और धन्ना सेठों का वर्चस्व हो चुका है, और सबसे जरूरी बात पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में तब्दील हो चुका है। मतलब आप नारे तो लगा सकते हैं किंतु आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप वोट तो दे सकते हैं किंतु आप पॉलिसी मेकर नहीं बन सकते, आप भीड़ का हिस्सा तो बन सकते हैं किंतु आप कभी भीड़ का कारण नहीं बन पाएंगे। और इसी वक्तवाद को हमें हकीकत में बदलने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल से छात्रों को फिर से नेतृत्व जगा के उन्हें सड़क से लेकर सांसद तक पहुंचाना होगा। यूथ विंग को केवल नाम का नहीं किंतु काम का बनाना होगा, और जो युवाओं को मौका दे रहे हैं ऐसे भारतीय छात्र संसद जैसे और भी मंचों का निर्माण करना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। और मैं अंत में अपने युवा साथियों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Heartiest congratulations, Bhavik, and I now request Shri Girish Gautam ji and Shri Basavaraj Horati ji to please join hands for felicitating Bhavik Gondalia. A big round of applause for Bhavik. Motivate him, guys. Give him a round of applause. He's a student leader. He's one amongst you. Shri Girish Gautam ji and Shri Basavaraj Horati ji are felicitating him. Thank you very much. And now it's the moment when I'm going to invite the special guest of honor, Professor Ram Charan ji, to kindly address the gathering. But before that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Ram Charan ji. With a career spanning over 40 years, Professor Ram Charan has been a guiding force for numerous top companies, CEOs and boards. Professor Ram Charan's passion for business was further honed at Harvard Business School, where he earned both an MBA and a doctorate degree, graduating with high distinction as a Baker Scholar. Having served on the faculties of Harvard Business School and Northwestern University, Professor Ram Charan's expertise and insights have shaped the strategies of leaders worldwide. He has coached over a dozen leaders who went on to become CEOs. Professor Ram Charan has earned him prestigious awards, including the Bell Ringer Award at GE's renowned Crotonville Institute and the Best Teacher Award at Northwestern University. Recognized by Business Week as one of the top 10 resources for in-house executive development programs, he continues to inspire and educate. An accomplished author, Professor Ram Charan has penned over 30 books, selling over 4 million copies in more than a dozen languages. His contributions extend beyond literature. He was elected a distinguished fellow of the National Academy of Human Resources and has served on the Blue Ribbon Commission on Corporate Governance. Let's welcome Professor Ram Charan, a visionary whose impact on the business world is both profound and enduring. Please put your hands together, my friends, and give a big round of applause to Professor Ram Charan ji. Thank you. Can you hear me clearly? All of you? First, I want to thank the foundational leader, Dr. Karat, who laid this foundation for a long time ago, that today we have this opportunity. I want to thank the dignitaries, the Vice President, the members of the Assembly.
I will mention to you only 4 points. Clearly coming out. Point number 1. Only leaders make a nation. How many of you have been to Singapore? Anybody here has been to Singapore? Nobody has been to Singapore. 1967, I used to go to Singapore, and all countries were saying Singapore will sink in the sea. Malaysia will really prosper. What made the difference? Leadership. They had nothing except the shoreline. Lee Kuan Yew used to come to Harvard. 1967, we watch him going through the campus, get hold of him. As the vice president said, look for new ideas. He was looking for new ideas. As the vice president said, reach out to the opponents, pull them together, get it done. There are 3 kinds of diversified people in Singapore: Chinese, locals, and Indians. We pull them together, build Singapore, and you probably does not know. America owes the largest reserves of currency to Singapore and Japan. Today, you build a nation. So, am I clear? You young people, you are the future. Do you want to be a leader? Do you have aspirations to be a leader? Do you want to build your skills as a leader? And picturing in your mind where you want to go, where you want to invest your life, you prepare. All people who go to Olympics, do they have a dream? Do they practice? Do they learn? Do they have determination? Why not us? Now, you have military leaders, business leaders, leaders who make movies, leaders who are medical profession. They all learn. They're all determined. They make a change. But they don't complain what's wrong. They figure out what is wrong and what to do about it. That's the attitude. Something wrong in military, find it, how to correct it. Something wrong in politics, find it, correct it. Something wrong in business, find it, correct it. Focus. Select a problem, find a way to solve it. How many of you feel India has a momentum? How many of you feel India has a momentum? People are coming here. Every single day, I see that. We have a momentum, ride on it. So now I'm going to take you through point number 1. You, your friends, I build the nation. We pull together a problem, solve it. We get opponents to work with us, get the ball rolling. No complaining. Complaining doesn't do anything. Point number 2. All of you here I see very young. All of you have at least
40 years of life to contribute. I think so. Maybe more. I have entered 85. So I had my fruitful life for almost 65 years. You can too. Now, in doing that, I want you to learn a few things. We want to celebrate 100th anniversary of independence. That's 2047. Clear? Which is only roughly 23 years from here. We should prepare now. Should we not? Should we be determined? We are number 5 in the world today. Why not be number 3? Then towards number 1. Right now, we are number 5. We will be ahead very soon, United Kingdom and Germany, and later Japan. And here we say, why are we doing that? We're not doing for the sake of doing it. We bring joy to our people. We demonstrate our competitive spirit. We are innovative. And we go in 23 years to from $4 trillion GDP to roughly $20 trillion GDP. Let me remind you, today our GDP is $4 trillion. We can double it every 10 years. Easy, by working hard. We can double again next 10 years. And that takes you to $16 trillion. Another 4 years. $20 trillion is worth looking at it. But remember, today world GDP is 100 trillion. In 20 years, it will be 150 trillion. The market is going to increase. We need to increase. So set your goal. How do we take Bharat from number 5 to number 3 in this period? How each of us take leadership. Whether I am a doctor, whether I am a politician, whether I'm an MLA, choose your passion. But choose what you love to do. Political part, MLA part is very important, which I'll take you through. Now, so that was my point number 2. Point number 3. How do we do this? In that part, you got to say, what training do I need? Where do I focus my training? All athletes, all cricketers, they get training. They go at it. They have a mission. They have a goal. Clear? Focus there. In politics, Rahul Karad started this. We have a school here. Get the training. Learn about it. It's not a party place. It is a place where each person can learn, practice, meet with the seniors, and learn the skills of how to be a contributor as a political leader to facilitate. So that's my point number 2. Point number 3, now I come to very specifics. In India, we have minimum 10 million small enterprises. 50 million, 100 million, very small enterprises. They build these enterprises from father, grandfather. They struggled. They got very high interest rates, loans, but they built the business. So we say each state, focus on growing those enterprises. Give them help. Do the training. So if I have 10 million enterprises and we together facilitate
to get them low-cost loans. We facilitate how to sell overseas. We facilitate to train them. Those 10 million companies here, how much employment will they create? Huge. That employment creation creates GDP. We can do all that. It is doable. We create training where you go for. So this is for each state. It is happening. In UP, you have so many large population, 240 million people. We divide that into small pieces and say how this one is good here, this one is good here, this one is good here. How do we create training for the people to create the growth in each part of UP, each part of Tamil Nadu, each part of Karnataka, each part of Maharashtra. Bring the people, their hostla, their psychology that we can win. It's happening very slowly. But that's one way to do that. That's point number 3. Point number 4, we have what the world does not have. Let me repeat. We have what the world does not have. Why do I say that? In my 50 years of work, today I'm here. Day after tomorrow, I will be in Japan. After that, I'll be in Brazil. So I get to see what's happening. What do we have? We have raw talent. We have in India raw talent. We train it. We are number 1 in the world in information services. 2 people, 1976, started, built it, we're number 1. We can be number 1 in other industries. That number 1 in the digital area. We have the raw power. We can be number 1 in digital, no doubt about in my mind. When I look at the CEO of Microsoft, I work with him. Digital. We see 30 CEOs, Indians in America, running trillion-dollar businesses. They are all here. They were all here. We can be there. We can do that. So my third point here is let's pick the industries. Digital, information services. We can be fantastic end-to-end sugar and focus to be number 1 in the world. We can get there. China has 4 number 1 industries. Right now, electric vehicle. Right now, telecommunication infrastructure. Right now, battery type materials. Right now, solar panels. Right now, appliances that we buy from China in India, the number 1 in the world. We absolutely can, should, and will number 1 in those industries. That's your point number 4. And the last point is for each of us. Working in state legislature, for example, learn what legislatures can do to create the economic growth in the local area. We are doing it now. We can accelerate more. And the art of doing it, as the Vice President Naidu said, you learn the best practices and you bring your opponents together and get the ball going forward. Because the growth of India to go to 2047 from 4 trillion to 20 is going to be driven in a major way at the state level, at the district level, at the local level. You come in, you see, you create jobs, and you take the Indian destiny from number 5 to number 3 and create more jobs. Do practice that. So the idea here is picture what you can be.
what you want to do. Picture what training you need. Picture how do I tenaciously build my capability with my colleagues. Picture that I go to political area is building a nation with businesses, with scientists, with technologists. And here, you come here, learn those tools, get to know the political leaders, just like we do in business, just like we do in military, just like doing technology. Because I come back, nation is built by leaders. Singapore, nothing. 1993, Dubai, nothing. Leaders build it. We are building it. And remember, democracy allows millions to be leaders. Dictatorship, autocracy is only one leader. It muscles the energy of the people. So here are 5 points. Think about it, make your career, and remember, be an Olympic champion the way the Olympic players are. Does that make sense? Do that. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Once again, please give a big round of applause to Professor Ram Charan ji for sharing his valuable insights with this 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you, sir. Thank you very much. My friends, it is now time when I am going to request our Prernalaya, revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, to kindly address the gathering. But before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film on life and work of revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. 21वीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है. It will become a Vishwa Guru in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir. Honorable guests on the dais, my learned friends, the scholars, thinkers, philosophers, MLAs, MPs, and many dignitaries who have come here for this function. When I see a large gathering of all the students, my young students, I am reminded of the day of 1995-96, when the very first Parliament of Science, Religion and Philosophy was held in the name of philosopher Saint Sri Jnaneshwara and all the great saints and sages of India and the world. And along with the very first sentence was written, and the words of wisdom which spoke the great noble son of India, Swami Vivekananda, then
union of science and religion oblique spirituality alone will bring harmony and peace to mankind. मुझे याद आती है, on that occasion I had the fortune of going to Rome to meet the Pope Paul II then. It was very difficult to meet him, but there was a very great conference. 7,000 delegates sitting in the audience, and I had the fortune of having some place in the front row. But I was not knowing the protocol. I had gone to invite him for the World Parliament of Religions that time. मुझे ये पता नहीं था कि प्रोटोकॉल होता है. The Pope Paul II of Rome, symbolizing the entire Christian community, he is more than a president of any country. पता नहीं भाई, जब पोप पॉल II साहब नीचे आ गए, हम सब लोग खड़े थे. How to address the Pope was the main issue. I was not knowing this protocol. मुझे याद आती है, when the Pope Paul II came down, there were 11 ministers following him, holding his robe. पता नहीं मेरे माथे पे कुमकुम भी था. आने के बाद he was just blessing the audience. He was not touching or trying to shake hand with him. When the Pope Paul II Honorable came, His Excellency, I just said, because when he had moved about 2-3 steps beyond me, but I shouted literally, Your Excellency, Honorable Pope Paul Sahab, I have come here as a humble servant of humanity. The first sentence which stuck to my mind, मानवता का एक पुजारी के नाते मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से. I have come here from India, Mother India, as a humble servant of humanity. And the moment I said this, Pope Paul came back. Never in the history it happens. But Pope Paul II Honorable, he moved back again and came to me, and we had a second with each other. And he kept his both hands on my head, and only he said, I bless you, young man. The entire audience was stunned. Why I am telling this? The whole gist and the essence of this conference, the students' conference, strengthening democracy and inspiring youth. एक शब्द में बड़ा संदेश है. You have just heard, friends, the great thinker, philosopher, a politician, Venkaiah Naidu Sahab, and his words of wisdom. And Mr. our Ram Charan Sahab, who is the most world famous management guru from India. बाकी तो सुनना है. दो बच्चों ने जो कहा वो भी बड़ा इंस्पायरिंग था. With a passion and fire in the belly. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, ये जो सामने बड़ा पिक्चर दिखाया है, सारे इतिहास है. स्वतंत्रता के मायने में जिन्होंने बलिदान दिया, सबसे ऊपर है महात्मा गांधी, नीचे है वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू है, बड़े बड़े नेता है. मुझे वो भी याद आ गई. आई एम नॉट स्पीकिंग इन पॉलिटिक्स, बट आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, at the mid-stroke of 15th of August. You know the whole story of what India was. How great fight for 150 years of time. कितना बलिदान था. भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, तिलक हो, सारे बाकी लोग हो. लेकिन आपको याद होगा कि when the Honorable Prime Minister Pandit Nehru, the first Prime Minister,
he is taking an oath, being the first Prime Minister of India. But he says, friends, at this mid-stroke of 15th of August, I stand before you as the first servant of India and then the Prime Minister of India. आपको सारी बात मालूम है, the first Prime Minister to the 14th Prime Minister नरेंद्र मोदी साहब. हर एक ने अपने जीवन में एक पैशन and a fire in the belly. सेवा की भाव है, मानवता का भाव है. भारतीय संस्कृति, परंपरा, तत्वज्ञान का सुंदर संदेश देने की बात कही गई. नाम तो ज़्यादा लंबी कथा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन today also you can remember, friends, you are all engineering students who understand what this engineering stands for. अभी ये गूगल का ज़माना है, सारी बातें हाईली टेक्निकल एडवांसमेंट की है. ऐसे ज़माने में एक ही सिद्धता हुई जो विवेकानंद ने कही थी. After all the scientific innovations and discoveries of the whole world, at the Google or the Facebook or any other name you take, will prove what Indian men, Indian culture used to say about 5,000 years back. बहुत सुंदर चिंतन है. मुझे खुशी है कि अभी अभी छोटी फिल्म दिखाई गई. एक ज़माना था जब संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, कनकदास हो, पुरंदरदास हो, जितने भी नाम ले लो, इनके मुख से एक ही शब्द निकल आता था, that the entire universe is a manifestation of your intelligence and consciousness. सत्य की खोज. और आज ये संस्था कम से कम संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन की चर्चा करती है. ये जो डोम बना हमने नहीं बनाया भाई, बन गया. आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. आई एम अ फार्मर्स सन कमिंग फ्रॉम माई विलेज. Let me tell you honestly, friends, now the whole world is giving a recognition to this dome situated in some place in Pune. And it is being known and understood by people of world community. The greatest scientists, men of religion, men of philosophy, they say it is a spiritually oriented scientific laboratory है वो. ये प्रयोगशाला है. जैसे हमारे नायडू साहब ने भी कहा, ये तो अनदर वंडर बन जाएगा भाई. वो भाषा ठीक है, लेकिन you and me, what is my duty? What is your duty? My duty as a teacher, your duty as a student or a learner, to understand the ultimate truth or the ultimate reality. ऐसी भाषा आ गई अभी. We have a school of consciousness and reality. ये लंबी बातें हैं बड़ी, लेकिन इसको साइंटिफिक बेस है. अल्टीमेट सत्य की खोज है. ईश्वर की संकल्पना क्या है? ईश्वर यह शक्ति है, व्यक्ति नहीं. ऐसी छोटी छोटी बातों का जिक्र होता है. एंड माई अपील टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली द स्टूडेंट्स, वुड बी, जरा गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो, और बाद में रियलाइजेशन हो, अनुभूति. सबसे बड़ी चीज़ है अनुभूति की. जब तक आप समझते नहीं तो आपको मालूम है कि कोरोना वायरस हुआ, द होल वर्ल्ड, रिमेंबर, including all the prime ministers, the president, the defense ministers, and every one of us, like including me, we were all hiding behind the doors. What was the reason? क्या हुआ था भाई? And you know it very well that the entire world is passing through a very chaotic stage. Horrifying situation world over. चारा क्या है भाई? यूक्रेन की बात हो, पैलेस्टाइन की बात हो, इसराइल की बात हो, क्या चल रहा है भाई? और भारत के अपने शांति प्रिय देश में भी we are little confused. What way to go and what way not to go. ऐसी लंबी बातें करने में अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा. It's already 1:35.
I'm grateful to all the people who have come from all the way from Tamil Nadu to Kashmir, and all those great men who have occupied the chairs on the stage, including the Honorable former Vice President, Mahana Sahab and all others, and to all of you friends, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Let's give a big round of applause, my friends, to revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, for his words of wisdom and the path that he has shown all of us. Thank you, sir. Thank you very much. My friends, this is just the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Many such sessions are going to happen from this stage, and many tall personalities are going to address all of you from this stage. In the next session, which is Youth Leadership in Politics, Rhetoric or Reality, we are going to witness the presence of Shri Rohit Pawarji of NCP, the National Spokesperson of BJP, Shri Shehzad Poonawalaji, the Honorable Member of Parliament, Shri Chirag Paswanji, and many more such personalities would be there in this first session. My friends, it is important that we all follow the timelines very strictly. My friends, I would now like to request the Director of MIT School of Government, Dr. K. Girisanji, to kindly propose the vote of thanks for the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Namaste, good afternoon. I stand here to express the vote of thanks of the inaugural session of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. BCS is the largest non-political platform to attract youth towards politics. It is our firm belief and conviction that good political leadership is a prerequisite for good governance and vibrant democracy. We have no doubt that BCS is an important initiative in that direction, reaching up to thousands of youth from across the country. On behalf of the 13th BCS Organizing Committee, especially the founder and president of MIT World Peace University, Dr. Vishwanath Karad, the initiator of MIT School of Government and catalyst of various social initiatives like BCS and NLC, Sri Rahul Karad, the Vice Chancellor, Dr. R.M. Chitnis, other academic leaders and staff and students of SOG, I wish to express deep sense of gratitude from the bottom of my heart to Sri Venkaiah Naidu, the former Vice President of India, for being the chief guest and delivering the address, sharing his words of wisdom with passion and sense of commitment. And also the present and former presiding officers of various state legislatures from different parts of the country for us gracing the occasion, and the management guru, Professor Ramcharan, and all other academic leaders and the student speakers and the legislators from different parts of the country, from different political parties, and the delegates from different parts of the country who have been registered and joined here for the BCS. I think from the bottom of my heart, I express sincere gratitude to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for proposing the vote of thanks. My dear friends, it's an important announcement for all of you that the next session is going to begin, the Youth Leadership in Politics, Rhetoric or Reality, precisely at 2:45 p.m. So I would like to request all of you to join us back after the lunch right here at 2:30 p.m. positively. Please hold back. The session is not over yet. I'm yet to tell you where the lunch arrangements are made. The lunch arrangements for all the students, faculty, participants, and volunteer students and LOs and student LOs is made right below this auditorium in the basement, right below this hall. The food arrangement for student, faculty, participants, and volunteer student LOs is made. It's a sincere request to all the honorable MLAs and MLCs to kindly join us after the lunch in the St. Gyaneshwara Hall for the respective session. I request all the honorable MLAs and MLCs to join us back at the St. Gyaneshwara Hall. My friends, with this we have reached the conclusion of the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to thank all the dignitaries present here today, and I would like to request all the students once again to please
remain present in next 1 hour. I would like to once again request all the honorable MLAs and MLCs to please join us in the St. Gyaneshwara Hall after the lunch. Shri Sumitra Tai Mahajanji and Prithviraj Chauhanji would be addressing all the honorable MLAs and MLCs. Thank you all the dignitaries on the dais. See you all at 2:30 p.m. as we will start the session at 2:45 p.m. Please have your lunch break of next 45 minutes and join us back at this very venue at 2:30 p.m. sharp. Thank you very much. See you across the break. कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर सनी पम गम पनि सानी सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सनी सा ग ग ग म ग ग रे 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 सनी पनि सा रे सनी सा ग ग रे रे म ग रे ग म म ग म ग म ग म सा ग नि सा प
पानी मा पा गा सा गा मा पा गा मा पानी सा गा मा गा जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी जनहित की शुरुआत बनेगी भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद नर भारत अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है प्यारा भारत अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है प्यारा लोकतंत्र है इसकी गरिमा इसका रक्षण ध्येय हमारा भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद नर सनी पम ग पनि सानी सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सनी सा ग ग म ग ग रे 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 सनी पनि सनी सनी सा ग ग रे म ग ग म म ग म ग म सा ग नि सा पनि म ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जो भी कमी है हम भर देंगे जो न हुआ है हम कर देंगे भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद चला कारवां अब न रुकेगा चला है तूफान अब न थमेगा चला कारवां अब न रुकेगा चला है तूफान अब न थमेगा ये निश्चय है ना के सपना शान विश्व की भारत अपना भारतीय छात्र संसद 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 भारतीय छात्र
सांसद, भारतीय छात्र सांसद, भारतीय छात्र सांसद, भारतीय छात्र सांसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 ना। सानी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या कुंडेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी जनहित की शुरुआत बनेगी भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद नर भारत अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है प्यारा भारत अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है प्यारा लोकतंत्र है इसकी गरिमा इसका रक्षण ध्येय हमारा भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद नर सनी पम गम पनि सानी सा गम ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सनी सा ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि पनि सा नि सा नि सा ग नि सा नि म ग नि ग म म ग म ग म सा ग नि सा पनि म ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जो भी कमी है हम भर देंगे जो न हुआ है हम कर देंगे भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद नर चला कारवां अब न रुकेगा चला है तूफान अब न थमेगा चला कारवां अब न रुकेगा चला है तूफान अब न थमेगा ये निश्चय है ना के सपना शान विश्व की भारत अपना भारतीय छात्र संसद 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 भारतीय छात्र
सांसद, भारतीय छात्र सांसद, भारतीय छात्र सांसद, भारतीय छात्र सांसद।
कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा सानी पम गा पानी सानी सा गा मा गा सानी पानी सा गा मा गा नी सा पा मा गा सा सानी सा सा सानी सा गा गा रे गा मा गा रे गा रे सा रे सा नी सा रे सा नी सा गा गा रे मा मा गा रे गा पा मा गा मा गा मा सा गा नी सा पा नी मा पा गा सा गा मा पा गा मा पा नी सा गा मा गा मा। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी पम ग म नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा सा नि सा ग ग नि ग म ग नि ग रि sa ri sa ni sa ni प नि सा रे सा नि सा ग ग नि सा रे म म ग नि ग प प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
ओ सर Millions of practitioners, and most importantly, we bring our meditation technique to everyone completely free of cost. So I hope many of you present here today have already experienced heartfulness meditation at some point. And if not, today you're in for a treat because we'll be having a very short experience of heartfulness meditation. So being here in Vivekananda Sabha Mandap, I'm reminded of some very inspiring words by him. All of us here have come with some special kind of, we have an optimism. We are idealistic and we want to change the world. I've seen in some of the posters around that it says that be the change. How can we be that change? And what is it that we can do? Youth is a time of promise, of tremendous potential, where we all want to do something really big, really great, and make a difference. Swami Vivekananda has said that the fire in you can light up the whole world. So how to change the world? How to make this difference? You all may have heard of the mystic Rumi. He once said that yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, and so I am changing myself. So when we make these changes in ourselves, we slowly see the changes manifesting in everyone around us. Just as when you stand near a fire, you will feel the warmth from the fire. When you stand near a block of ice, you will feel the coolness from the ice. Very similarly, when you transform yourself from within, anyone coming in contact with you will feel your qualities of peace, centeredness, and joy, optimism, and enthusiasm. So the way to change the world is to begin with ourselves. World peace will begin with individual peace. So how do we do this? Obviously, we have to work on our thoughts, on our mind, and for that we need a technique like meditation. So today I will give you a very short experience of heartfulness relaxation plus meditation. I hope I have everyone's attention over here. It's important that we all listen carefully. We have all taken time out of our lives to be here. Let us make the most of it. Let us not waste this opportunity that we have to experience something very beautiful, which will really bring that inward transformation. I request everyone to please put your mobile phones on silent, so that you can really enjoy this experience of meditation. Anyone who is walking around, I request you to come and be seated. Don't miss this great opportunity to experience some inner peace. So please be seated very comfortably. I'll give you a relaxation, a guided heartfulness relaxation, followed by a very short period of meditation. We don't have much time today, but we'll try our best. So everyone,
Please be seated. Sit very comfortably and close your eyes very softly and very gently. Take a deep breath in and let go. With your eyes gently shut. Now, let us begin with our toes. Wriggle your toes and now feel them relax. Feel a relaxing energy move up through the soles of your feet, your ankles, your calves, right up to your knees, relaxing your legs. If you see others meditating in silence, I request you to please come and be seated very softly so as to not disturb them. Feel this relaxing energy now move up through your thighs, relaxing them. Relax your hips, your stomach, your abdomen, and deeply relax your waist. Move your awareness to your back. From the top to the bottom, your entire back is now completely relaxed. Relax your chest and shoulders. Feel all the stress from your shoulders simply melting away. Relax your upper arms, your forearms, your hands, right up to your fingertips. Relax all the muscles in your neck. Move your attention to your head. Relax your jaw and your chin, your lips, your nose and eyes, your eyebrows and forehead, your cheeks, your earlobes, all the muscles in your scalp, right up to the roots of your hair. And feel how now your entire body is completely relaxed. Gently bring your awareness to your heart and stay here for a few seconds with the supposition that the source of divine light is already present within you and is attracting your attention from within. Please start meditation. That's all. Keep your eyes closed and think about what you just experienced during meditation. When you feel ready, you can gently open your eyes. I know that was a very short experience and I wish we had more time. If you're interested, you can go to heartfulness.com and learn more about us. You may download the app of Heartfulness Daily Meditation. We'll be meeting you tomorrow again at the same time. And I really hope that more of you will join and sit and experience this inner bliss and peace.
Those of you who would like to experience a year-long youth engagement, which is really going to be something that will create a shift in the consciousness of this world. All you youngsters present here, I request you to please register for the same. We'll be sharing the link with you tomorrow as well. I once again thank MIT WPU for giving us this opportunity, Professor Vishwanath Karad and Shri Rahul Karad as well. Thank you so much for giving this time. Thank you so much, Madam Anjali Bapat. Thank you so much for giving this experience to all of us. My friends, we are now all set to start with the Session 1, Youth Leadership in Politics, Rhetoric or Reality, for which I would like to invite on stage Dr. Sunil George, Dean School of Law, MIT World Peace University, Dr. Anjali Sane, Dean Public Policies, School of Economics and Commerce, Dr. Vikrant Gaikwad, Associate Dean of Academics at School of Engineering, Dr. Saji Baby, the Director of Department of Sustainability Studies, Dr. Dinesh Bhutada, Program Director, Department of Chemical Engineering, Dr. Parul Zadhav, Professor of School of Electronics and Communications Engineering, and the student leaders, Yash Varandal from Maharashtra, then Shubhankar Pandit from Gujarat, Aisha Ulde from Maharashtra, Bomito Kinimi from Nagaland, and Prajakta Bhange from Maharashtra. I request them to kindly come up stage. I request Dr. Sunil George, Dr. Vikrant Gaikwad, Dr. Saji Baby, Dr. Dinesh Bhutada, Dr. Parul Zadhav to kindly come up stage. We are now going to start with the session with the speeches of the student leaders. First and foremost, I would like to request Yash Varandal from Maharashtra to kindly address the gathering. Please welcome him, my friends. He is a student leader, one amongst you. A round of applause for him. Encourage him, motivate him as he addresses all of you. रत्नकर दौत्तपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातम। नमस्कार या उपस्थित महानुभाव एवं या उपस्थित युवा शक्ति। मैं यश हरिभाऊ वरंदल प्रभु श्री राम चरण स्पर्श भूमि नासिक महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष यूथ लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, रेटोरिक और रियलिटी इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। राजनीति में युवा नेतृत्व, वक्तवाद या वास्तविकता, क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या कुछ और? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस देश में है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति जिस देश के पास है, वो हमारा भारत। और जिस दिन ये दोनों शक्तियां आपस में मिलेगी, जिस दिन भारत के लोकतंत्र में युवा शक्ति का नेतृत्व होगा, उस दिन भारत माता को विश्व गुरु बनने से और कोई शक्ति रोक नहीं सकती। देश का नेतृत्व युवा शक्ति पर टिका हुआ है। क्षेत्र चाहे जो भी हो, किंतु हर क्षेत्र में नव विचार को जन्म देने की क्षमता युवा पीढ़ी में है। और राजकीय क्षेत्र में पदार्पण के बाद वह क्षमता अधिकतम विकसित होती जाती है। देश का हर एक जागरूक युवक राष्ट्र प्रेम की अहमियत तहे दिल से जानता है। यह जागरूकता राष्ट्र प्रेमी युवाओं को राजकीय स्तर पर एक बलशाली विचारधारा रखने वाले नेता के रूप में प्रकट करती है। और इस हेतु हम सभी युवा राष्ट्र प्रेमियों का यह मूलभूत कर्तव्य बनता है कि हम बड़ी निडरता से
अपने कदम देश के राजकीय क्षेत्र की ओर ले जाए और राष्ट्रहित सर्वप्रथम इस नीति का जीवन के अंत तक अवलंब करे। लेकिन वास्तव तो यह है कि आज का युवा बेहतरीन तरह से राष्ट्रहित जानते हुए भी देश के राजकीय क्षेत्र में आने से मुंह फेर लेते हैं। कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति में नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हौसलों से हर काश्ती को हटाना पड़ता है, मौका मिलता नहीं उसे उठाना पड़ता है। अरे कब तक बाहर बैठकर इस राजनीति और राजनेताओं को कोसते रहोगे? अगर मन में इतनी ही नकारात्मकता भरी इस लोकतंत्र की, तो स्वयं राजनीति में आकर इस सिस्टम में सुधार लाओ, वास्तविकता के साथ जागो। जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ लिख कर IAS और IPS ही बने। अरे विश्व के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को पढ़े लिखे नेताओं की भी तो जरूरत है, लेकिन हमारे नजरअंदाज के कारण ही देश में फिर वही वंशवादी परंपरा को शक्ति मिलती है। थैंक यू। किंतु अब हमें इसे बदलना होगा। ये टाइम पॉलिसी मेकिंग का टाइम है। ये जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अल्टरनेटिव ढूंढने का सवाल नहीं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने का सवाल है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवा नेतृत्व को एक और दृढ़ सत्य में बदले, वरना हम यहाँ बैठकर केवल शब्दों का खेल खेलेंगे और समाज को उठाने का साहस नहीं करेंगे। अब युवा नेतृत्व को वक्तवाद से निकलकर वास्तविकता में बदलना होगा और हम सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा। वैसे तो सच ये है कि नेतृत्व स्वीकारने से नहीं बल्कि साकारने से बनता है, और वो ताकत आज की इस युवा शक्ति में है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारा एक साथ एक दृष्टि और एक ही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर समृद्ध और संवेदनशील भारत का निर्माण। और इसी संकल्प के साथ सज्ज रहेंगे सदा ही हम, हर आंधी तूफान हटा देंगे। All the dignitaries for the session 1 are joining hands for ringing the bell of democracy. All the dignitaries setting the tone for the first session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, Youth Leadership in Politics, Rhetoric or Reality. I request the chairman of the session, Shri Basavaraj Horati ji, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Shri Rahul Karad sir, Shri Shehzad Poonawala ji, Dr. Sunil George, Dr. Anjali Sane, Dr. Vikrant Gaikwad, Dr. Sachi Baby, Dr. Dinesh Bhutra, Dr. Parul Zadhav to kindly come up stage. And now to start with the session, I would like to request the Dean of Public Policy, School of Economics and Commerce, Dr. Anjali Sane, to kindly propose the welcome address. Respected dignitaries on and off the dais, esteemed guests, and the vibrant youth of Bharat, on behalf of our founder president, Dr. Vishwanath Karad sir, dynamic executive president, Shri Rahul Karad sir, on behalf of our honorable vice chancellor, Dr. Ravi Kumar Chitnis sir, and on behalf of the entire team of Bharatiya Chhatra Sansad, I consider it my proud privilege to extend a heartfelt welcome to each and every one of you to the first session of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad, a platform where the echoes of youthful voices converge to shape the destiny of our nation. Today we gather here for a session of paramount importance: youth leadership in politics, rhetoric or reality. Let me share a few enlightening facts and figures that highlight the significance of youth participation in politics. India, with its colossal youth population, is witnessing an era where nearly 65% of the populace is below the age of 35. The average age of an MP is 54 years. 253 out of the total 543 MPs
were over the age of 55, 13% of MPs are under the age of 40, and only 2.2% were under the age of 30. India's politics is many times referred to as young country, old leaders. Though almost every mainstream political party has a functional student wing and vigorously participates in its student union elections in colleges and universities, there lacks a systematic procedure and mentorship to elevate the student leaders into legislative politics. Challenges persist. Youth participation in politics faces obstacles such as lack of resources, unequal access to opportunities, and sometimes a negative perception of the efficacy of youth leadership. However, within these challenges, there exists a chance to reshape the narrative and narrow the divide between the rhetoric of empowering the youth and practical challenges they encounter. Our youth is not just a demographic dividend. They are a force capable of transforming challenges into stepping stones towards a brighter future. This session is not merely a platform for discussions, but a call to action. Let us dissect the challenges, explore avenues for empowerment, and foster a meaningful dialogue that propels our youth from the realms of rhetoric to the corridors of political reality. We are privileged today to have with us distinguished Basavaraj Horetti ji, Shri Chirag Paswan ji, and Shri Shehzad Poonawala, who comprise of individuals who have navigated the intricacies of political leadership, bringing practical insights into our discourse. Through their narratives, we hope to glean valuable lessons and vision a future where youth leadership is not just an aspirational notion, but an integral part of our political reality. With the thought of encouraging the young leaders of today, we would also like to felicitate the Adarsh Yuva Sarpanch of today, as well as the Adarsha Uchcha Shikshit Yuva Vidhayaks of today. In every session, in fact, of the Bharatiya Chhatra Sansad, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, जो स्वयं में एक प्रेरणा है, और आज उन्हीं के द्वारा हम आप जैसे युवाओं को हमारा एक प्रयास है कि आपको भी एक encouragement मिले, एक motivation मिले. Once again, I would like to extend a warm welcome, and I would like to tell all the youth of today, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही. मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू ना कर सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू ना पा सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही. With these words, once again, I extend a warm welcome to all the dignitaries present here today, as well as all the MLAs, as well as all the youth of Bharat present for this session. Once again, welcome, welcome one and all. Thank you very much, Dr. Anjali Sane, for proposing the welcome address. And as per the tradition of this platform, I would now like to request Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate and welcome the dignitaries for this session. First, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chairman of this session, Shri Basavaraj Horetti ji, the Honorable Chairman of Karnataka Legislative Council. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Shri Basavaraj Horetti ji, the Honorable Chairman of Karnataka Legislative Council. Next, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the Honorable Member of Parliament Lok Sabha, Shri Chirag Paswan ji. A big round of applause as we welcome Shri Chirag Paswan ji, Honorable Member of Parliament of Lok Sabha. Thank you very much, sir. I would now like to request sir to kindly felicitate and welcome Shri Shehzad Poonawala ji, National Spokesperson of BJP. And it's a proud moment. He is the alumna of MIT School of Government. Can we have the mic, please? My dear friends, I really feel proud that Shehzad is a student of the first batch of MIT School of Government, the year 2005.
And we all know he's such a popular face in the country now. And, you know, he used to be at the last bench somewhere sitting very quietly, very, very peacefully. And today he's here. This is the only time I will say, Rahul hai to mumkin hai. A big round of applause, my friends, for all the dignitaries, including Shehzad. Thank you very much for those felicitations. And now, in order to understand more in detail about the youth leadership in politics, rhetoric and reality, I would like to request my team to kindly relay the curtain raiser video. Ladies and gentlemen, students and future leaders, welcome to the most electrifying session of the day, Youth Leadership in Politics, Rhetoric or Reality. The youth have a voice that's just as powerful as any other. And today, we're here to celebrate that power. Let's dive right in. Picture this, India, a nation with a median age of 28.2 years. But its political arena, well, let's just say it's not exactly a youth party. The median age of politicians in our parliament arrived 55 years. But why is that? Politics isn't seen as a noble profession. Political parties have been a little slow on the youth uptake and those youth wings. Well, they're often missing in action when it comes to policy making. Plus, student participation in university elections, not as vibrant as it should be. But hold your horses because change is in the air. Around the world, we see a wave of visionary young leaders stepping up. Meet Gabriel Boric, Sana Marin, Leo Varadkar, Rishi Sunak, setting the world on fire in their 30s and 40s. And right here in India, the winds of change are blowing on two fronts. Young leaders like Chirag Paswan, Ramya Haridas, B.V. Srinivas, Kanhaiya Kumar, Anna Malai, Tejasvi Surya, Shehzad Poonawala, Imran Pratap Ghari and Aditya Thackeray have captured the nation's attention with their work. Now what's on the agenda for today's session, you ask? We're going to tackle some burning questions. What are the reasons for the low representation of youth in legislative bodies? How can political parties enhance youth participation in political decision making? How does youth representation in politics contribute to strengthening democracy? Get ready for a dynamic discussion that promises to inspire, inform, and ignite the leader in you. Don't just sit back, join the conversation. Be the change, and let's shape the future together. Are you ready? Thank you very much for that curtain raiser video. My friends, this session is going to be extremely important session for all of you. And let me quickly remind you once again that those two podiums which you see in the audience are for you. So if you are willing to ask questions to the stalwarts on the stage, please reach out to those podiums, submit your questions, and you never know, you might get a chance to ask the question directly to the dignitaries on the dais. And now, as we go ahead, I would like to request the chairman of the session, Shri Basavaraj Horetiji, to propose his welcome address, or the opening address. But before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Basavaraj Horetiji. Shri Basavaraj Horatti, a seasoned politician from Karnataka, currently holds the esteemed position of the chairman of the Karnataka Legislative Council. Remarkably, he has won 8 consecutive terms since 1980, making him the longest serving member of the council. Notably, Shri Basavaraj Horatti has served as the Minister for Rural Development, Panchayat Raj, gaining insights from countries like England,
France, and Switzerland. Committed to the development of education, he holds a Bachelor of Arts and a Master's of Physical Education degree. His journey began as a physical education teacher in Hubli before transitioning to a prominent political role. Let's extend a warm welcome to Shri Basavaraj Horatti. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Shri Basavaraj Horatti ji for his opening address of this session. Dignitaries on the dais, of the dais, ladies and gentlemen, today I am extremely happy to participate in this session. The most important subject is that why youths are not taking part in politics, why they are not interested in the politics, why they are not become MLA, MLC or MP. This is a problem of the today's entire country. Youths are not coming properly in politics. What are the reasons? Why they are not coming? Why they are not taking interest? There are several questions are there. So in this respect, I want to ask the students or youngsters, what is your problem? Just one by one come here and ask any questions and tell your inner feelings about the politics. Today, the politics is sometimes some people feel that it is politics is very dirty. So all people are saying like this, what will happen in the future of India? So good people should come in the front, and youth particularly, youth should come the front for the politics, whether they are come to the assembly or parliament or council, whatever it may be. Today, the most necessary of the youths in politics. So we are thinking, when we have discussed last time in Bombay with Rahul ji and Vishwanath ji, we wanted to start a political college to give the training to the students, youth students, like MBA, B.Ed, like this. So I don't want to talk more. So many people are here, youngsters are here. You can come and express your feelings and ask any question. Those who are sitting on the dais, there are so many youths are there. Youths are there, MP, MLA, like this. So all majority of the people, particularly youths, if you are taking interest in politics, the scenario of the country will be changed. And good people, when they are entering in the politics, when they are entering in the parliament or assembly, so naturally, you can express your feelings and you can give the message to the youths in India. So I don't want to talk more than this. So I ask those who are interested to talk, those who are wanted to ask any questions in respect of this politics, the role of the youths. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your opening address and setting the tone for this first session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, the youth leadership in politics, rhetoric or reality. My friends, it's now time when we felicitate the Adarsh Yuva Vidhayak, the ideal youth MLA honor for the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy, which would be given at the hands of Honorable Chairman of this session and all the honorable dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to invite on stage the Honorable Member of Legislative Council of the Maharashtra, former President of Maharashtra State Youth Congress and founder of Jai Hind Yuva Manch, Shri Satyajit Sudhir Tambeji. A big round of applause, my friends, for Shri Satyajit Sudhir Tambeji. He's being conferred the Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA honor in the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause, my friends.
आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि मुझे एमआईटी में एक आदर्श विधायक का पुरस्कार दिया जा रहा है। जिस एमआईटी ने मुझे छात्र राजनीति में प्रवेश दिलाया था, एमआईटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे इट्स अ वेरी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से मेरी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस से लेके आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसी कारण मैं बड़ा खुश हूँ कि एमआईटी से जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा कि एमआईटी से इनविटेशन नहीं आ सकता है, मुझे एमआईटी से आदेश आ सकता है, क्योंकि हम एमआईटी के परिवार के एक घटक है। और बड़ी खुशी है कि सर आपके हाथ से, आपके जैसे सीनियर लीडर के हाथ से मुझे ये आज पुरस्कार मिल रहा है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, 2024 का जो साल है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए महाकुंभ मेला 2024 में होने वाला है, क्योंकि 127 में से 64 देशों में इस बार इलेक्शन होने जा रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया में 64 देशों में इलेक्शन हो रही है। डेमोक्रेसी की एक उत्सव हो रहा है, और इसलिए इस उत्सव में, इस लोकतंत्र के उत्सव में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और युवाओं की भागीदारी सिर्फ चुनाव लड़के ही नहीं हो सकती, बल्कि युवाओं की भागीदारी राजनीतिक दृष्टया हम गंभीर कैसे हो सकते हैं, इससे हो सकती है। चुनाव लड़ना ही कोई मकसद होना नहीं चाहिए, राजनीतिक दृष्टया हम लोग गंभीर होने चाहिए, सतर्क होने चाहिए। और यही सिक्वन मुझे लगता है कि एमआईटी सारे लोगों को यहाँ पे देती है। इसलिए मैं एमआईटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी बात को यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you very much, Satyajit Tambeji, thank you very much. And now it's time when I request and invite the Uच्च Shikshit Adarsh Yuva Sarpanch Samman awardee, highly educated sarpanch of different states of India, for the expression of commitment towards roots, and the award will be given at the hands of Honorable Chairman of the session. I would like to first request the Sarpanch of Wadi village, Tehsil Miraj, District Sangli of the state of Maharashtra, and who is pursuing the MBBS, Madam Yashodhara Rajesh Shinde. A big round of applause, my friends, for Miss Yashodhara Rajesh Shinde, the Sarpanch of Wadi village. A big round of applause, a person who's pursuing MBBS and a Sarpanch, a true motivation for the youngsters. Next, I would like to invite the Sarpanch of Sahungra village, Balachar Tehsil, Shahid Bhagat Singh Nagar, Punjab, Shri Raj Balbinder Singh Ji. A big round of applause, my friends. Shri Raj Balbinder Singh, who's LLB and the Sarpanch in the state of Punjab. मैं गजब से कहना चाहता हूँ, मैं गजब से कहना चाहता हूँ, मैं उस देश का बेटा हूँ जहाँ सम्राट अशोक और महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। मैं गजब से कहना चाहता हूँ, मैं उस देश का बेटा हूँ जहाँ 50 मील के बाद भाषा, रंग और पहरावा बदल जाता है। मैं उस देश का बेटा हूँ जहाँ जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान का नारा है। सो थैंक्स MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जिन्होंने आज एक मोटिवेशनल इवेंट यूथ के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और ये मेरा आज का अवार्ड ये डेडिकेट होता है, समर्पित होता है मेरे सुहुंगड़ा गांव के सभी लोगों को और मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, और स्पेशली
मेरे गांव के एनआरआईज को, क्योंकि एनआरआईज ने विदेशों में बैठकर हमेशा ही हमारे गांव के लिए सपोर्ट की है। और आज के इस इवेंट पर मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूं। जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, सो जीवन को महान बनाने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, जो विजन शहीद आदम शहीद भगत सिंह जी के पास था, जो विजन विवेकानंद के पास था, आज वो विजन हर एक यूथ को लेना पड़ेगा। सो MIT के सभी स्टाफ का, जहां की मैनेजमेंट का, भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। सो अंत में मैं कुछ लाइनें बोलकर, जिन लाइनों से मैं हमेशा ही मोटिवेट होता हूं, प्रभावित होता हूं, अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब तक ना हो सफल जिंदगी में नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक्स। Thank you very much, Shri Raj Balvinder Singh Ji. Thank you very much for your motivation. Next, I would like to invite on stage the Sarpanch of Rajpur Gram Panchayat, Hathras, Uttar Pradesh, Srimati Priyanka Tiwari Ji. A big round of applause for Srimati Priyanka Tiwari, who's having the postgraduate diploma in social media and web journalism, and who's Sarpanch of Rajpur Gram Panchayat, Hathras, Uttar Pradesh. सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राहुल सर का, MIT यूनिवर्सिटी का, जिसने हम जैसे सरपंचों को यहाँ पे बुला के सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। तो धन्यवाद सर। हमारे काम को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी यूथ की जो संख्या है वो यहाँ बैठी हुई है। मतलब हमारे देश में बदलाव आ रहा है। मेरा जो यूथ एज था, अभी भी मैं यूथ हूँ, बट जो मेरा कॉलेज टाइम था वो इसी फेज से निकला था। मैं अभी राहुल सर को बता भी रही थी कि हमारे बैक ऑफ माइंड में ये होता है कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब जगह है, वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ नहीं करना है। मुझे हमेशा से यही लगता था, लेकिन मैं इन्हीं की सब बात को वापस कोट करूँगी, राहुल सर की बात को, कि इन्होंने कहा था कि अगर कुछ ख़राब है तो आप उसी में जाइए, उसको सही करने के लिए आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो मेरी जर्नी भी ऐसे ही शुरू हुई थी। अपने गांव की हालत को देख करके ही मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ी थी और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारा गांव पूरी तरह से CCTV सर्वेलेंस में है, वाईफाई है मेरे गांव में, पूरी तरह से सारी रोड्स बन गई हैं। मतलब जितना मैं कर सकती थी मैंने अपने पिछले 2.5 साल में अपने गांव में वो हर चीज़ कर दी है। जो मैंने सोचा था वो मैंने 2.5 साल में कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया है। और मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि अगले 2.5 साल में मैं और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करूँगी, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। और आज राहुल सर से और MIT के सारे स्टूडेंट्स से मिलके, सर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भारत का भविष्य सही हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद। Thank you very much, Madam Priyanka Tiwari ji. Thank you very much for your motivation. Next, I would like to invite on stage the Sarpanch of village Lambi Ahir, district Junjunu, Rajasthan, Madam Neeru Yadav ji. Please put your hands together and congratulate with a big round of applause, Madam Neeru Yadav. सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राहुल सर को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सरपंचों को यहाँ बुलाया और इस मान सम्मान से नवाजा और सर के हाथों हम एक आदर्श सरपंच के रूप में हमें अवार्ड मिला। तो उसके लिए मैं MIT यूनिवर्सिटी का, इस भारतीय छात्र संसद की पूरी ऑर्गेनाइज टीम का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
और मैं मेरे सामने बैठी मेरे देश की इस युवा शक्ति से ये कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर ये सोचते हैं, हम अक्सर इस मौके की तलाश में रहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और हम भी महान बन जाए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मौके हमारे पास होते हैं, बस उन्हें हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जिस टाइम मैं सरपंच बनी थी उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि शायद मैं MIT यूनिवर्सिटी में एक आदर्श सरपंच के तौर पर नवाजी जाऊंगी और मुझे अवार्ड मिलेगा। तो मैंने सरपंच रहते हुए अपनी पंचायत में जिस प्रकार के मैंने काम किए, मैंने अपनी पंचायत की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए उन्हें खेल के प्रति जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया और महिलाओं के अंदर उस आत्मसम्मान को मैंने पैदा किया, तो शायद आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और मैं आप सभी से एक बात जरूर कहूंगी कि हम जब भी कुछ अपने लाइफ के अंदर कुछ नया करने जाते हैं या हम एक लीग से हटकर कुछ काम करते हैं तो काफी लोग उसका विरोध भी करते हैं और काफी समस्याओं का हमें सामना भी उसमें करना पड़ता है। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर महात्मा गांधी जी की वो 4 लाइनें थी जिनको साथ लेकर के मैं चली कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो फर्स्ट दे इग्नोर यू, लोग हमें इग्नोर करते हैं, देन दे लाफ एट यू, फिर वो हम पर हंसते हैं, देन दे फाइट विद यू, वो आपके साथ लड़ाइयां करते हैं, देन यू विन, उसके बाद हम जीतते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब प्रोसेस सभी के साथ होते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए और पूरी निष्ठा और अपनी पूरी ताकत के साथ उस चीज को कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की 4 लाइनें मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, किसी मकसद के लिए अगर खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े रहो, किसी मकसद के लिए अगर खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े रहो, अगर गिरो तो बीज की तरह गिरो ताकि फिर उग सको और उसी मकसद के लिए खड़े रह सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much for such beautiful words and motivation, and congratulations to all the 4 Sarpans and Adarsh Yuva Vidhayak. It is indeed I would like to request the Felicitation team to give the citations back for a beautiful photograph. And Neeru ji, जैसे आपने बहुत उम्दा कहा, I would also like to add the lines to what you said. बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ेगी हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता. So it is indeed very true, as she rightly said, that first they will laugh at you, first they will not believe in you, but when you will see the success, then they will recognize you. Indeed, a very, very important message and motivation from all of them. My friends, it is now my honor and privilege to invite on stage the eminent speaker who is present here with us on this stage, the Honorable Member of Parliament of Lok Sabha, Shri Chirag Paswan ji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team if they can please show us a small film made on life and work of Shri Chirag Paswan ji. Shri Chirag Paswan is a young But I'm sure we'll quickly recover from that technical glitch. Just give us a moment. My friends, I'm really happy to share with all of you that the stage of Bharatiya Chhatra Sansad, as we have just witnessed, it is the stage where we recognize and motivate the young talent of this country. On this stage also, you have 5 student speakers from different parts of the country, those who would be coming and addressing the youth of this nation and sharing their thoughts with them. But you also have the opportunity to participate yourself in this discussion, dialogue, deliberation through Youth to Youth Connect. We have shared with all of you the details of Youth to Youth Connect, and it's a humble appeal to all of you to participate wholeheartedly in the Youth to Youth Connect activity, which will happen right after the sessions from the stage.
The platform of Bharatiya Chhatra Sansad is a place where 5 different awards have been given, and they are very, very special. Adarsh, that is Ideal Legislative Assembly Speaker, Legislative Council Chairman Award has been given from this stage. Second, Adarsh Mukhyamantri Puraskar, Ideal Chief Minister Award is also been given from this stage. Adarsh Uच्च Shikshit Yuva Sarpanch Samman, which you witnessed just now. Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy, which also we witnessed just now. And Adarsh Yuva Adhyatmik Guru Samman has also been given to the visionary spiritual leaders, young leaders of this country from the platform of Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, it is indeed our honor that we get to participate and witness such great personalities from this stage. I request my technical team to kindly relay the film. Shri Chirag Paswan is a young, dynamic member of parliament representing the Jamui constituency in Bihar. Currently serving his 2nd term, he also holds the position of president of the Lok Janshakti Party, Ramvilas. Entering politics in 2012, Shri Chirag Paswan gained prominence in the 2014 Lok Sabha elections, securing a victory from Jamui. As the son of the late Shri Ramvilas Paswan, a respected union minister, Shri Chirag Paswan leads LJP with dynamic campaigns such as the impactful Bihar First, Bihari First initiative during the 2020 Bihar Assembly elections. His NGO, Chirag Ka Rozgar, focuses on providing employment opportunities to the youth. Beyond politics, Shri Chirag Paswan briefly explored Bollywood after completing his education in computer science. With his impactful oratory skills, Shri Chirag Paswan has earned a position of respect in parliamentary debates, election rallies, and live media shows. Let us welcome Shri Chirag Paswan. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause the eminent speaker of this session, Shri Chirag Paswan ji. Thank you. Thank you everyone. Thank you for giving me this opportunity. यहाँ आप लोगों के बीच आकर अपनी बातों को रखने का, खास तौर पर मेरे उन तमाम युवा साथियों के सामने अपनी बातों को रखने का जो संभवतः आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ने की उम्मीद रखते होंगे, इच्छा रखते होंगे या अपेक्षा करते होंगे। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मैं भी अपने आप को आपके साथ जोड़कर देख सकता हूँ। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं राजनीति में नहीं था, जैसा अभी इस फिल्म में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, एवी में दिखाया गया, मूवीज़ में था, दूसरे क्षेत्र में था, काम कर रहा था। जब मैं दूसरे क्षेत्र में था उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ। Actually that was the time when I seriously realized it wasn't really like I was a nepo kid who always wanted to be in politics. मैंने दूसरा रास्ता अपनाया था, पर उस रास्ते ने मुझे इस बात का एहसास ज़्यादा दिलाया कि ज़रूरी है राजनीति में जाना, और ख़ास तौर पर हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है जो एक अलग सोच रखते हैं। आज की तारीख में मेरी राहुल जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी इसी चिंता को प्रकट किया और मेरी भी यही चिंता रही है कि आज की तारीख में एक फैशन बन गया है पॉलिटिक्स को, राजनीति को, राजनेताओं को क्रिटिसाइज़ करने का। राजनीति गंदी है, राजनेता गंदे हैं, राजनीति भ्रष्ट है, तमाम नेता भ्रष्ट हैं, ये एक जनरल परसेप्शन बना दिया गया है। अगर इस परसेप्शन को तोड़ना है तो उसके लिए भी हमें ही आगे आना होगा। आज जब मुझे ये मौका मिला है मेरे तमाम युवा साथियों के सामने अपनी बातों को रखने का, तो यह आग्रह आप लोगों से ज़रूर कर जाऊंगा। कहा जाता है ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। उस बदलाव को जिसको आप देखना चाहते हैं उसके लिए खुद आपको अपना योगदान देने की ज़रूरत है। मेरे लिए भी बहुत आसान रहता पेरीफेरी पे खड़े होकर, मैं भी दिन रात कोसता। मैं बिहार से आता हूँ, बिहारी हूँ, बिहारी होने के नाते मेरे लिए
ये और ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह था क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति का केंद्र रही है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बच्चा जन्म बाद में लेता है और उसका एसोसिएशन किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ पहले हो जाता है। इतने ज़्यादा राजनीति से जुड़े हुए लोग बिहार के लिए हैं, तो मेरे लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने आप को किस तरीके से राजनीति के साथ मैं जोड़ूं। उस वक्त मैंने ये फैसला लिया कि भाई अगर राजनीति को कोसा जाता है, राजनीति के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, तो क्यों नहीं उसका हिस्सा बनकर हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आज आप लोग के बीच भी यही आग्रह करने आया हूँ, जब तक राजनीति में नई सोच नहीं आएगी, जब तक राजनीति में युवा जोश नहीं आएगा और जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, मुझे इस बात की शिकायत रही है, जो कि आम जनता की भी रहती है, कि भैया अगर अलग अलग व्यवसाय के लिए एक बेसिक मापदंड होता है शिक्षा का, तो राजनीति में ये क्यों नहीं है? राजनीति में क्यों नहीं एक बेसिक मापदंड हो कि भैया कम से कम आप इतने शिक्षित होने चाहिए, इतने एलिजिबल होने चाहिए कि आप राजनीति के क्षेत्र में आ सकें, जो कि आज तक नहीं है इसमें। पर ज़रूरत है ऐसे लोगों को आने की जो कि जानकार हों, और उन लोगों को आने की जो जात पात धर्म मजहब से उठकर एक नई सोच रखते हैं। मैं जिस राज्य से आता हूं, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जात पात धर्म मजहब पर पूर्णतः आधारित रहती है, और मुझे इस बात की तकलीफ रही है कि भैया आज की तारीख में जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, देश चांद की क्या सूरज की बात कर रहा है। आज की तारीख में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आज भी हम लोग जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए हैं। आज भी जातीयता हावी होती है, आज भी सांप्रदायिकता हावी होती है। मैंने ये प्रयास किया कि कम से कम अपने राज्य में मैं इस भ्रम को तोड़ने का मैं काम करूं। आज जब मैं अपने राज्य में जब मैं विकास की बात करता हूं या अपने एजेंडे की बात करता हूं, तो मेरा एजेंडा किसी अगड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ या किसी पिछड़ा वर्ग से या किसी दलित समुदाय से या किसी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन की मैं बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रदेश एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करे, और ये संभव है। 2014 में हम लोगों ने देखा कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हम लोग के सामने आए, जिन्होंने देश को समुदाय, जाति या धर्म में नहीं बांटकर 125 करोड़ देशवासियों की बात उन्होंने की। 2014 में आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो उस वक्त उन्होंने 125 करोड़ देशवासियों को उन्होंने संबोधित करने का काम किया। और यही कारण है कि उस वक्त जात पात धर्म मजहब की कई बेड़ियां टूटी हुई, कई लोगों ने जात पात धर्म मजहब से उठकर हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन करने का उन्होंने काम किया। आज भी ज़रूरत है ऐसी ही सोच की। अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित देश के निर्माण की कल्पना करते हैं, तो ज़रूरत है समाज के हर उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की, जो आज की तारीख में भी पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठा है। जब तक हर उस व्यक्ति को हम लोग साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग विकसित प्रदेश, विकसित समाज, विकसित देश की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, और ये काम देश के युवा ही कर सकते हैं। लंबा समय हम लोगों ने देखा देश के अनुभवी नेताओं को। मैं नहीं मानता कि उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान नहीं दिया। उन्होंने भी अपनी तरफ से हर वो संभव कार्य किए, पर कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मुझे ज़रूर ये तकलीफ़ होती है जब मैं युवाओं को सुनता हूँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हुए राजनीति से, और जो आज के इस सेशन की थीम भी है, जब मैं उनको सुनता हूँ कि वो राजनीति से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर चलते हैं और कहीं ना कहीं, ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। जब ये सारी बातें वो बोलते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, पेरीफेरी पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, और जो आमतौर पर हम सब करते भी हैं। आमतौर पर हम सब बोलते हैं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, पर देश में जो गलत होता हुआ दिखता है, उसके लिए हम ही लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। आज जब मैं यहाँ MIT में मौजूद हूँ, और मेरे लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मुझे लगता है संभवतः एकमात्र ऐसी ये संस्था है जहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज़ को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। एक ऐसा मंच यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से आने वाले दिनों में देश के राजनेता अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ, पूरी तैयारियों के साथ आने वाले समय में देश की राजनीति में अपना योगदान देंगे। आप सब
उस स्तर पर पहुँचे, उसके लिए आज से ही आप सबकी यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस तैयारी के साथ, तमाम जानकारियों के साथ पूरी तरीके से जब आप देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तो उस वक्त सही मायनों में हम लोग देश को उस गति से आगे लेकर जा सकेंगे जिस गति की सोच हम लोग रखते हैं। भाई मैं भी जब बच्चा था या कॉलेज में था या आप लोगों की उम्र का था, नॉट दैट मैं अभी आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्र का हूँ, बट हाँ आप लोगों से कुछ साल ज़रूर बड़ा हूँ, बट जब आप लोगों की उम्र का था, कॉलेज में पढ़ता था, मेरे भी मन में ख्याल आते थे कि भैया देशों विदेशों में हम लोग जाते हैं, क्यों नहीं भारत विदेश जैसा दिखता, क्यों नहीं हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन्स आती हैं, क्यों नहीं हमारे यहाँ भी विकास के नए नए मापदंड तय किए जाते हैं। पर उसके लिए उस सोच का होना ज़रूरी है। अगर वो सोच ही नहीं होगी, आज की तारीख में अगर हम लोग बुलेट ट्रेन्स की बात तो कर रहे हैं, कम से कम आज नहीं तो कल हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे भी, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। विदेशों में जाकर हम लोग उसकी खूबसूरती की, उसकी सफाई की हम लोग बात करते हैं, कम से कम आज ये चर्चा हो रही है कि कैसे भारत को स्वच्छ रखा जाए। इस सोच की चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। पर कई बार हम लोग देखते हैं कि रूढ़िवादी राजनीति में हम लोग ये चर्चा तक नहीं करते। मेरे जितने साथी जो यहाँ पर बिहार से होंगे वो कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ पाएंगे। आज भी जब हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है, कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल आ जाए, या कैसे हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर आ जाए, या कैसे हमारे घर के सामने एक नली गली खुल जाए। ये विकास के मापदंड बिहार जैसे राज्य में बनकर रह गए। जब तक आप बिहार में आईटी कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में मुजफ्फरपुर में नहीं मिल सकती, भागलपुर में नहीं मिल सकती, दरभंगा में नहीं मिल सकती, पटना में नहीं मिल सकती? पर इसके लिए ये सोच का होना ज़रूरी है, और ये सोच हम युवा ही ला सकते हैं। मैं इसको बहुत विनम्रता से मानता हूँ कि जोश के साथ, नई सोच के साथ अनुभव का भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी है उस अनुभव को हम अपने जोश के साथ मिलाकर एक सही मायनों में, सही दिशा में अपनी ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल करें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप सब अपने अपने राज्यों के अलग अलग कोने में जाकर जब एक विकसित देश की बुलंदी के लिए जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे, जब आप लोग मेहनत करेंगे, तो यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पर उसके लिए राजनीति से जुड़े ज़रूर अपने तमाम युवा साथियों को भी भारत की राजनीति की जानकारी दें। तकलीफ़ होती है मुझे कई बार जब युवाओं को ये तक पता नहीं होता कि भारतीय राजनीति का ढांचा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, संघीय ढांचा क्या है, एमएलएस की भूमिका क्या है, एमपीज़ की भूमिका क्या है, मुख्यमंत्री क्या हैं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। ये ऐसी बेसिक जानकारियां हैं, और मैं इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन बातों को प्रोत्साहित एमआईटी के द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं, सही मायनों में तभी हम लोग युवाओं को भारत की राजनीति के साथ जोड़ सकेंगे। आज भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी है भारत में जो कि युवाओं की है। लगभग 65% आबादी देश की ऐसी है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। भारत की अगर आप औसतन उम्र भी देखें तो वो भी 30 वर्ष से कम है। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी है देश में युवाओं की, जिनको एकजुट होना ज़रूरी है। मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो कई बार हम लोग को जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति में बांटने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पर वो ये लाभ भी तभी उठा पाते हैं जब हम बंटते हैं। अगर हम लोग एकजुट होकर रहें, एकत्रित होकर रहें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को बांट सके, जो हम लोग को अलग कर सके। और यही युवा शक्ति है जो देश को आगे लेकर जा सकती है। मैंने कई बार सदन में इस विषय को उठाया भी है। मुझे ताज्जुब होता है कि भारत जैसा देश जो एक युवा देश है, वहाँ पे बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, विभिन्न प्रकार के और आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है। पर भारत जैसे एक युवा देश में अभी तक एक युवा आयोग नहीं है, अभी तक एक यूथ कमीशन नहीं है। कई बार मैंने भारत की संसद में भी इस आवाज़ को उठाने का मैंने कार्य किया, पर मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब आप जैसे युवाओं का मुझे साथ मिलेगा, ज़रूरत है कि भैया भारत में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो,
एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश में युवाओं की है। एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां पे युवा अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और समाधान लेकर आए। भारत में जब हम लोग युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, ये विडंबना है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि भैया हम कैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। पर कई ऐसे युवा हैं जो कि इन क्षेत्रों से हटकर रुचि अलग क्षेत्रों में भी रखते हैं। कई हैं जो कला के क्षेत्र में जाकर वहाँ पर गायक बनना चाहते होंगे, निर्देशक बनना चाहते होंगे, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, संगीत के, नृत्य के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे। कई ऐसे युवा हैं जो कि खेल कूद में जाना चाहते हैं, पर उन्हें वो अवसर नहीं मिलते, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत में एक युवा आयोग हो जिसके माध्यम से युवा वहाँ पर जाएं अपनी समस्याओं के साथ और वहाँ से समाधान लेकर आएं। पर इसको इम्प्लीकेट कैसे किया जाएगा? इसको इम्प्लीकेट तभी किया जा सकता है जब एक बड़ी भागीदारी युवाओं की भारतीय राजनीति में हो, और उसकी शुरुआत ज़मीनी स्तर से होना ज़रूरी है। आज मुझे गर्व होता है यहाँ पे अधिकांश युवा अवॉर्डीज हैं जो कि भारत के, देश के कोने कोने से, गांव-गांव से आए हुए हैं। सरपंच हैं, विधायक हैं, कई ऐसे हैं जो कि भारत के गांव से जुड़े हुए हैं। और हकीकत है, भारत आज की भी तारीख में गांव में बसता है। ज़रूरत है वहाँ से हम लोगों की भागीदारी की, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी भागीदारी को और मजबूती से और प्रमुखता से और वोकल होकर और लाउड होकर अपनी बातों को भारत के गांव से लेकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद तक हम लोग रखने का काम करेंगे। अपनी मजबूत भागीदारी को आगे लेकर आने का काम करेंगे। खुशी है मुझे कि आज की तारीख में मौके भी कई राजनीतिक दल दे रहे हैं देश के युवाओं को आगे आने का। उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग कैसे उठाएं, ये हमारे ही हाथों में है। पर इस उम्मीद के साथ कि जैसे मेरा देश एक युवा देश है, वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद भी एक युवा संसद होगी, जहाँ पे भारी संख्या में देश के युवा, देश की युवतियाँ वहाँ पर आएंगी। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए MIT का मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरी मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे बसवा राज सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ इनका पुराना संबंध रहा है, रिश्ता रहा है। मुझे ये मौका मिला कि यहाँ पर आए, शहजाद भाई यहाँ पर हैं, पुराने मित्र, साथी मेरे, और तमाम अवॉर्डीज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ जिनको अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आप सबको अवार्ड्स दिए गए। ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for setting the tone of the event and for setting the tone of this session so gratefully. Thank you so much. As the tradition demands, as the stage demands, we will now move forward with the student speakers, and with that, I would like to invite upon stage Shubhankar Pandit from Gujarat to address the gathering here. A huge round of applause from one of our student leaders, Shubhankar Pandit. Arise, awake, and stop not till the goal is reached, was the Guru Mantra given by Swami Vivekananda to the youth of this nation. Today, I would like to reconstruct my speech on this Guru Mantra as it serves to be a guideline for the youth for participation and strengthening of democracy. A very warm welcome to everyone. Today, I, Shubhankar Pandit Rao, a young leader from the vibrant state of Gujarat, would like to voice my opinion on youth leadership in politics. Rhetoric or reality? Sisters and brothers, arise from the apathy that has blocked our review of this democracy. Today, the average age of a member of parliament is 54 years old, while that of the entire nation is 28 years old. Hence, when issues such as sex education, sex status, mental health education, etc. are stated in the parliament, they are deemed to be sensitive. But with a close review of young educational institutions like school, colleges, and gatherings like these, we might understand that the youth is well versed on all these topics. So this proves to be a great example that if youth is provided with opportunities in the legislative bodies,
Not only will their voices be heard, but would serve to be an aspirational base for an all-inclusive democracy for India at 2047. Sisters and brothers, awake from the malice of the politics that have closed our eyes. Today, our participation has been discouraged because of the wily nature of dishonest politics and money power, which are not only incompetent in nature, but a slap on the face to meritocracy. So now, do we want to just sit and be complainers or become change makers? There are numerous ways to enter the political landscape, from conducting social media campaigns to raising your voices for meaningful changes. Sisters and brothers, stop not till the goal is reached. We are the ones who have witnessed the implications of poverty, hunger, climate change, and exclusion of technology. And it is our time to storm into the corridors of system and make our voices heard on the principle of nothing about us without us. I would like to remind this gathering the noble words of Dr. Baba Sahib Ambedkar. However good a constitution may be, it might turn out to be bad if the people who are called to work upon it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it might turn out to be good if the people who are called to work upon it happen to be a good lot. Now it is in our hands for the transformation from rhetoric or reality to rhetoric to reality. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. A huge round of applause for Shubhankar Pandit from Gujarat. I request Shri Rahul V. Karad sir to kindly felicitate him. Next up, we have Aisha Mehmood from Maharashtra. I invite her to the stage to kindly share her thoughts with the gathering here. Good afternoon, respected dignitaries and all my dear friends. We cannot always build the future of our youth, but we can build our youth for their future. Myself, Aisha Mehbubulde from Pune College of Arts, Science and Commerce. Today, I stand before you all to address a topic which is both timely and crucial for the future of our country. That is youth leadership in politics, rhetoric or reality. As we all know, India is a democratic country. Today, India has more youth people than any other country. The youth group is a group which includes the people of age between 14 to 40 years. The youth group is mentally and physically strong, where every country strives for more. Today, politics need youth leaders like Subhash Chandra Bose, Shahid Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and many more, who can create a new country and future with their energy. युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने की योग्यता रखता है. Youth has a potential. They just only need to provide them a resources and good chance. But if we flip the page, we can see that today's youth is developing a lack of interest in politics. And their perception is that their voice won't be heard. So here a question might be arise, that why and how we can increase the role of youth in democracy. So let's answer why. Involving youth in decision-making process will always help us to ensure that policies are designed according to their interest in mind. Youth can provide us new perspective. Involving youth will also help us to build a sense of ownership. Now, let's answer how we can do this. Youth should participate in democratic process like voting and engaging in community services. Youth can hold elected officials and policy makers accountable for their actions. Last but not the least, youth themselves act in a positive way and make India a developed India. अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, अगर
परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। और मेरे पीढ़ी के ये युवा भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरोगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, हिंदुस्तान निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Aisha, for passing on such a powerful message. I request Sri Rahul Vikaraj sir to kindly felicitate her. We also have with us today Bomito Kinimi from Nagaland. I request him to kindly address the gathering here. We look forward to your views. Barack Obama once said that the youth of our nation is our future, and it is their responsibility to actively participate in politics. The vibrant youth of India holds a pivotal role in propelling various dimensions of societal development and progress. With its huge demographic dividend, India is probably the youngest democracy in the world today. However, while the average age of our demography is just 29 years, the average age of our MP is currently 63 years. In the current Lok Sabha, the average age is 54 years, making it one of the oldest Lok Sabha in our political history. Is this a representative democracy? I do not think so. In the realm of politics, sincere youth participation is necessary to introduce fresh perspectives and ideas, leading to a more responsive and political dynamic landscape. The youth should definitely take part in politics and bring in professionalism in politics, and viewing it as a platform for public service rather than merely a profession or means to earn a living. It is noteworthy that 12 of the last 16 American presidential nominees from the two major US political parties graduated from either Harvard or Yale, our most prestigious institutions, produce youths who seldom venture into politics. Michael Medved once wrote that the skills and determination required to get into these institutions are in themselves indicators of suitability for high offices. However, many of our young graduates from India's elite universities often consider political involvement beneath their aspirations. The problem with this very approach is this, that it has left out of politics the very group of people that plays a foundational role in our political demography. It is often said that India is young, but its leaders aren't. Therefore, my message to the youth of India who have principles and ideas is this: when you think about the future of India, think also of getting involved in politics. The nation needs us. Let us get leaders whom people look up to and not leaders whom we have to keep finding excuses for. If the youth of India wants our country's leadership to be full of people whom the nation admires, we will have to enter the fray ourselves. I would like to end my speech with a quote of Mahatma Gandhi, which says, "Be the change that you wish to see." Let this quote serve as a powerful reminder to each one of us that we all have the ability to make positive changes in our lives and communities. And I firmly believe that the MIT School of Government will nurture youths to be political leaders of tomorrow. Thank you. Jai Hind. Thank you so much for your inspiring words. I request our convener, Sri Rahul Vikaraj sir, to kindly felicitate him. Let's keep those hands going, everyone. We also have with us Prajakta Bange from Maharashtra. And let's welcome her to the podium. We look forward to your views on youth leadership in politics, rhetoric or reality. Thank you. भारतीय छात्र सांसद के इस मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर तथा यहाँ उपस्थित सभी युवा शक्ति को मैं प्राजक्ता भांगे सहृदय प्रणाम करती हूँ। मैं मानती हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व कभी हकीकत हुआ करती थी, जो आज बस बयानबाजी बनकर रह चुकी है। आज के भारत का युवा जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे से नारे लगाता है, आज के भारत का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता है, तब उसी भारत की उसी जमीने 23 साल के शहीद आजम
सरदार भगत सिंह की वो हिम्मत भी देखी है, जहां वो अपने फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगाते हैं और अपनी शहीदी से इस देश में क्रांतिकारियों का नया सैलाब खड़ा कर देते हैं। इस देश ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस जज्बे को भी देखा है, जहां वो संपूर्ण दलित समुदाय को अपने हक की आवाज खुद उठाने की सीख देकर संपूर्ण समाज को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसी भारत की इसी जमीने आयन लेडी इंदिरा गांधी के उस हौसले को भी देखा है, जिनके व्यक्तित्व की नींव ही क्रांतिकारियों ने रखी थी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए इस भारत को प्रेरणा दी थी। इतिहास के ऐसे कितने भी पन्ने पलट दिए जाए तो हर एक पन्ने पर एक नया युवा नेतृत्व कौशल्य दिखाई देता है, जिसने भारतीय राजनीति को और भारतीय राजनीति की तरफ देखने वाले हर एक नजरिए को संपूर्णतः बदल कर रख दिया। राजनीति की इस परिभाषा से हटकर जब हम मराठा साम्राज्य को भी याद करते हैं, तब महज 10-12 साल की उम्र में राम रानी, तारा रानी, महारानी येसुबाई से राजनीति की शिक्षा लेकर आने वाले समय में मराठा साम्राज्य को औरंगजेब से बचाती है। 26 साल में हारे हुए सभी मराठा साम्राज्य किले महज 6 महीने में फिर से स्वराज्य में शामिल करती है। तब तत्कालीन कवि उन पर लिखते हैं, सम्राज्ञी ना समर कुशला लोकनेत्री प्रतापी, सत्ता धन्ना नमो नीरणी आपुले राज्य स्थापी, नारी नोहे अमर जगती ज्योती ही पौरुषाची, तारा रानी जननी आमच्या अस्मितेची यशाची। उनका ये जज्बा और कम उम्र का नेतृत्व कौशल्य देखकर मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व एक अत्यंत ही अटल वास्तविकता है। मगर जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की कालिख से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान ऐसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने की बजाय बुर्खा पहनकर आने या ना आने पर भगवे और बुरखे में लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक शरेआम निर्भया की इज्जत उजड़ जाने पर हमारे देश का युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा 4 इंच की स्क्रीन पर मणिपुर की सड़कों पर शरेआम उजड़ रही देश की बेटी की इज्जत का चलचित्र बनाकर उसे वायरल करने की फिराक में रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व की बात मुझे बस बयानबाजी लगती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। धन्यवाद। What an energy, Prajakta Bhange from Maharashtra. I think she deserves a standing ovation, guys. She's one among you, but her energy was commendable. Please accept this standing ovation, Prajakta. Such an energetic, full of energy address by Prajakta Bhange. And my friends, the first student speaker of this group, Yash Varandal, has already addressed the gathering, but he has not been felicitated. So I request Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate our first student speaker, Yash Varandal. Let's give him once again a big round of applause. He also spoke very wonderfully in the beginning of this session. Thank you very much. And after looking and listening to all these student leaders, 2 lines came to my mind. सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोक ले तो हिम्मत और बढ़ती है। So I'm sure that these student speakers would have given you that much needed himmat, and I'm sure all of you would see the light of success one day. My friends, now it's time when I invite the next eminent speaker who's present here with us, the national spokesperson of Bharatiya Janata Party and alumni of MIT School of Government, Shri Shehzad Poonawala ji. But before I request him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Shehzad Poonawala ji. Shri Shehzad Poonawala,
born in Pune, Maharashtra, is a distinguished lawyer, BJP national spokesperson and columnist. Graduating from MIT School of Government, Pune, MIT SOG, he meticulously prepared for a career in politics and governance. Commencing his career with the Congress in 2008, Shri Shehzad served in the research team of the All India Congress Committee's AICC's media cell. During his early involvement, he held the position of Vice President of the National Students Union of India, NSUI wing in Pune. Adding to his accolades, Shri Shehzad Poonawala assumed the role of BJP spokesperson on December 23, 2021 and was appointed as the in charge of the social media and IT cell of the party's Delhi unit. His dynamic presence in both legal and political spheres reflects a commitment to public service and a multifaceted contribution to the political landscape. Let's extend a warm welcome to Shri Shehzad Poonawala. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Shri Shehzad Poonawala ji. प्राजक्ता को सुनते हुए मुझे लगा कि युवा स्मृति ईरानी तो नहीं आ गई कहीं। युवा नरेंद्र मोदी भी यहीं कहीं बैठे हैं। सर्वप्रथम श्री विश्वनाथ कराड जी, श्री राहुल कराड जी, MIT इन्स्टिट्यूट आणि माझी जन्मभूमी पुणे आणि पुण्याचे जनतेचा मी मनापासून आभार मानतो की आज मला लोकमान्य टिळकांची, छत्रपती शिवाजी महाराजांची, सावित्रीबाई फुलेंची या पावन भूमीत मला परत येण्याचा अवसर मिळालं, तर तुमच्यामुळे मिळालं, तर त्यासाठी मी तुमचा खूप खूप आभार प्रकट करतो, आभार मानतो। मंच पर विराजमान हमारे बीच बसवराज जी, श्री राहुल कराड जी, अभी कुछ देर पहले ही यहीं से हमारे NDA घटक दल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी हमारे बीच में थे। उनकी फ्लाइट थी तो वो यहाँ से अभी उन्होंने प्रस्थान किया। सत्यजीत तांबे जी भी हमारे बीच में थे और अभी भी मंच पर, जिसे मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के सबसे अहम हिस्से हमारे अलग अलग जगहों से चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, इन सभी लोगों का मैं अपनी जन्मभूमि पुणे में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी शुरुआती दौर में जब फेलिसिटेशन हो रहा था तो आदरणीय राहुल जी ने बताया कि मैं यहीं का प्रोडक्ट हूं, मैं यहीं से बाहर निकला हूं। इसीलिए मैंने चुटकी लेते हुए कहा कि एक लौता ऐसा अवसर है जहां मैं कहूंगा राहुल है तो मुमकिन है, अन्यथा देश तो क्या कह रहा है आप जानते हो। ऐसा है कि MIT में आपके बीच में 14-15 साल के बाद जब मैं वापस लौट के आया हूं तो ये मेरे लिए एक घर वापसी की तरह है। इन्हीं क्लासरूम्स में, इसी मैदान में, इन्हीं कैंपस में और यहीं पर आसपास में जो कॉफ़ी शॉप्स है, यहीं पर बैठ बैठकर हम लोगों ने अपना रास्ता तय किया था। तो आप ही में से निकला हुआ, आप ही के बीच से निकला हुआ मैं भी आप ही की तरह MIT का एक प्रोडक्ट हूं और आज ये मेरी घर वापसी का सुंदर अवसर जो है वो राहुल जी की वजह से ही एक तरीके से पूरा हुआ है। मेरी तो 14-15 साल के बाद घर वापसी हो रही है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भी 22 जनवरी को एक घर वापसी होने वाली है।
और इस बार जो घर वापसी होने वाली है, चाहे कोई आक्रांता, कोई आतंकी सोच वाला व्यक्ति जितना भी प्रयास कर ले, अब भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मुट्ठी हाथ में उछाल कर कहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक वोट, एक युवाओं की ऊर्जा क्या क्या करा सकती है। यह आप लोगों की ऊर्जा, यह आप लोगों की सतर्कता, यह आप लोगों की ताकत, यह आप लोगों की शक्ति जब आ जाती है, तब देखिए 14-15 साल पहले जो अस्तित्व नकारने वाले लोग थे, आज वो लोग भी कोट पे जनेऊ डालकर रोम रोम करते करते आज राम राम करने लगे हैं। ये एक वोट की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है। पर मित्रों, इसके अलावा भी युवा शक्ति की जो एक ताकत है, उससे देश की विकास यात्रा में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह आपको कुछ बातों से पता चल जाएगा। जब आपके बीच से, MIT के इसी कैंपस से मैं दिल्ली की ओर प्रस्थान मैंने किया 14-15 वर्ष पहले, मेरा भी वनवास हुआ था। तो जब मैं गया वहां पर, तब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। फ्रेजाइल 5 में हम उसको गिनते थे। लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था थी। जब आपके बीच का आप ही का MITian, आप ही के पुणे का बेटा आपके बीच में लौट आया है, तो ये युवा शक्ति की ताकत है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में नहीं बल्कि फास्टेस्ट 5 में है, और हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली आज अर्थव्यवस्था बनकर स्थापित हुए हैं। मैं जब आपके बीच से निकला और मैं दिल्ली गया था, तब भारत में केवल 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का जाल बिछा हुआ था। जब मैं आपके बीच लौट कर आया हूं, तो 2022-23 तक आज भारत में 6 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछ चुका है। और जैसे प्रभु श्री राम ने राम सेतु को बनाया लंका और भारत जोड़ने के लिए, वैसे आज एक डिजिटल सेतु खड़ा हो चुका है भारत के शहरों को गांव तक जोड़ने के लिए। मित्रों, आज भारत में जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है, एक एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपके हाथ में है, एक कालखंड यह भी था कि भारत 90 से 95% अपने मोबाइल फोन को इंपोर्ट करता था। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, तो भारत की यह ताकत है कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में आज स्थापित हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, परंतु हमारे सम्मानित नेता है, और क्योंकि वो मंच पे आए हैं, तो हम सभी उनका स्वागत भी करते हैं और उनका बहुत आदरपूर्वक तरीके से उनको नमस्कार भी करते हैं। मित्रों, ये भारत की यात्रा रही है। जब आपका बेटा MIT से निकला था, तो भारत में मात्र 700 स्टार्टअप थे, 700 स्टार्टअप्स। जब आपका बेटा आपके पास फिर से आया है इस मंच पर, तो भारत में आज 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे युवाओं ने तैयार किए हैं, और आज हम भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। यह ताकत है युवा शक्ति की। और एक वोट, एक युवा ताकत अगर जागृत हो जाए, तो भारत की विकास यात्रा में उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यह आपके सामने है। 2014 में जहां पर 1 GB डेटा, आपको याद होगा, मेरी उम्र के कुछ लोग होंगे, मैं मिलेनियल हुआ, आप लोग जेन जी है,
हमारे समय पर 1 GB डेटा 300 रुपया प्रति GB का होता था। आज एक विस्तृत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऐसे बिछ चुका है, आज इंटरनेट की व्यवस्थाएं इतनी व्यापक हो चुकी है कि आज 1 GB डेटा मात्र 9 रुपए का मिलता है। और इसीलिए आज भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा है कि जब आपका बेटा यहां से गया, तब प्रधानमंत्री जब 1 रुपए भेजते थे गरीब कल्याण के लिए, सामाजिक जन कल्याण नीतियों के लिए, तो 1 रुपया जब भेजा जाता था तो 85 पैसे उसमें से लूट लिए जाते थे। आज जब डीबीटी और जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशंकु को तैयार किया गया है, तो जब 25 लाख करोड़ केंद्र की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए भेजे, तो वो 25 लाख करोड़ गरीबों के पास पहुंचे और 3 लाख करोड़ देश का बचा। तो आज भारत की ये विकास यात्रा है। मित्रों, युवाओं की जो शक्ति है ना, उसे बहुत समय तक दबा कर रखा गया, और इसीलिए मैं इसको कहता हूं पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप का गलत अर्थ मत निकालिए, कैप सुनकर कई लोग विचलित भी हो सकते हैं। कैप का मतलब है सी फॉर करप्शन। आपको याद होगा बड़े बड़े घोटाले होते थे, 2G, CWG, जीजाजी। ए फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स, किस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से, वोट बैंक की नीति के हिसाब से किसको क्या मिलेगा यह तय होता था। और पी फॉर परिवारवाद। परिवारवाद का तो एक ऐसा उदाहरण था कि जब चंद्रयान 1 2008 में भारत ने, इसरो ने भेजा, और वो पूर्ण तरीके से उस समय पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, हालांकि उसका एक इंपैक्ट पॉइंट चंद्रमा पर हुआ, तो 2008 में उस चंद्रमा पर इंपैक्ट पॉइंट का नाम रखना था, तो उस इंपैक्ट पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। मतलब कि कुछ लोगों ने तो परिवारवाद का पताका अंतरिक्ष में भी लहरा दिया था। आज जब भारत की राजनीति में कैप की पॉलिटिक्स को हटाया गया है, तो आज भारत में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रही है, आज जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, तो आज 2G, CWG, जीजाजी की बात नहीं, आज भारत में बात होती है तो 5G और 6G की बात होती है। आज भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की नहीं, बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचता है, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचते हैं, 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। और जब राशन पहुंचता है तो वो राशन मोहम्मद के भी घर पे पहुंचता है, मोहित के भी घर पे पहुंचता है। जब शौचालय बनता है तो वो शिल्पा के भी घर पे बनता है, वो सुल्ताना के भी घर पे बनता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए आज तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति है। और जहां तक परिवारवाद की बात है, तो आज जब चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके भारत को वो प्रथम देश बनाता है जिसने ये उपलब्धि हासिल की, तब उस टच पॉइंट का नाम किसी परिवार के नाम पर नहीं, बल्कि उस टच पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट रखा जाता है। कुछ लोग परिवारवाद का पताका लहराते हैं अंतरिक्ष में, हम भारत और सनातन और हिंदू का पूरा झंडा जो है वो अंतरिक्ष तक लहराने का आज काम करते हैं। ये तब्दीली हुई है राजनीति में, ये चेंज हुआ है पॉलिटिक्स में। और इसीलिए आज ये सबसे बेहतरीन और सुंदर अवसर है राजनीति में जुड़ने का, अपना योगदान देने का। मित्रों, एक वोट से आप क्या क्या बदल सकते हैं, यह आपके सामने है। आज आपकी एक वोट की यह ताकत है कि चाय वाले का बेटा भी
आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दलित आदिवासी घर से आने वाली महिला भी देश की राष्ट्रपति बन सकती है और देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले व्यक्ति शोषित वंचित समाज से आते हैं। आज ये युवा शक्ति के कारण ही मुमकिन हो पाए। मतलब भारत की और किसी भी देश की विकास की, तरक्की की यात्रा में युवा शक्ति की गारंटी बहुत जरूरी है। और इसीलिए यह जरूरी है कि आज आप अपने आप को केवल बेनिफिशियरी ऑफ चेंज नहीं बल्कि एजेंट ऑफ चेंज के रूप में देखें। और जब आप एजेंट ऑफ चेंज के रूप में आप अपने आप को देखेंगे तो आपको समझेगा कि देश में धारणाएं भी बदल रही है और धरातल भी बदल रहा है। एक धारणा हुआ करती थी भारत के बारे में कि भारत में ऐसा ही होता है, भारत में ऐसा ही भ्रष्टाचार, भारत में ऐसे ही आतंकी हमले, ना जाने कितने आतंकी हमले हुए। पुणे में भी एक हमला हुआ था, मुंबई में भी हुआ था, चेन्नई में भी हुआ था, जयपुर में भी हुआ था। परंतु आज धारणा और धरातल ऐसा बदला है कि जब मुंबई का हमला हुआ और उस समय की सरकार पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देती थी, आज अगर कोई उरी और पुलवामा करने की जुर्रत करता है तो उसे घर में जाकर हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मतलब ये MFN स्टेटस से हटकर आज MTJ स्टेटस तक बदला हुआ है। वो भी तब होता है जब युवा शक्ति जागृत होती है। मित्रों, समय यहां का समाप्त हो चुका है, परंतु 2024 का समय आ रहा है। यही समय है, सही समय है। युवा शक्ति के साथ ही भारत की शक्ति बढ़ेगी। आप सभी लोगों को 22 जनवरी के लिए और 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। Thank you very much, Shri Shehzad Poonawala ji. Thank you very much for such motivating words and pinpointing the importance of youth in this politics and the progress of nation. My friends, it is our good fortune that we have on stage the Honorable former Chief Minister of the state of Maharashtra, Shri Prithviraj Chauhan ji. I would like to request Shri Rahul Karat sir and all the dignitaries to join hands to felicitate and welcome the former Chief Minister of the state of Maharashtra, Shri Prithviraj Chauhan ji. A big round of applause, my friends, for Shri Prithviraj Chauhan ji. Thank you, sir. Thank you very much for your presence here today in this important session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, Youth Leadership in Politics, Rhetoric or Reality. I request you to kindly propose your remarks. My dear student leaders, the respected dais, Bharatiya Sahab and all other members, faculty and everybody, I must make a mention that exactly after 13 years, Prithviraj Chauhan ji is here at this very campus, particularly for Bharatiya Chhatra Sansad. Of course, in between he came number of times, but that time he was the Chief Minister. And while fostering this idea of Indian Students' Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, 2011, I remember, I was getting restless. The School of Government was initiated and I was feeling that there's a batch of 40, 50, 60, how can we make an impact on the nation? And what is that we can do for the democracy and good governance and leadership? And when I communicated this idea to Prithviraj Chauhan ji that ऐसा कुछ करना है, Indian Students Parliament, पूरे स्टूडेंट यूनियन के बच्चे, सोशली एक्टिव स्टूडेंट्स पूरे भारत से आएंगे और आपको सराहना है। और मुझे प्रसन्नता है कि 13 साल बाद सर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं इमोशनल भी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की गरिमा और इसी के पेट से अभी राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन और ये सभी कल्पनाएं जो पैदा हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। यू ब्लेस्ड दिस वेरी आइडिया। आई रिमेंबर कपिल सिब्बल साहब वॉज ऑल्सो देयर HRD मिनिस्टर। यू स्पोक टू हिम दैट टाइम दैट ये शिक्षण संस्था बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की और देश की और आपको आना है, तो आप दोनों उसमें थे और बाकी बहुत सारे लोग उसमें थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट एक्सप्रेस योर इमोशंस। He just addressed our MLAs. There were some 100 MLAs and they had a wonderful dialogue just now on the academic, the governance issues of and the polity and so many other subjects. Prithviraj Chauhan sahab. Thank you, Prithviraj ji. Namaskar, Honorable Bharatiya ji, Shehzad ji, Rahul Karat ji, dignitaries on the dais,
and the distinguished delegates from the Student Parliament of 2024. Friends, as Rahul said, I was here in 2011, exactly 13 years ago this month, when the concept of student parliament was initiated on this very ground, this very place here, and I was fortunate to take part. And it was very clear at that time that this is a very revolutionary idea of involving the youth in the governance processes, in policy making. From these concepts was born the School of Governance, and then now a new initiative of National Legislators Conference, the unprecedented gathering of 1,700 MLAs and MLCs was held a few months back in Mumbai. First such event done by non-government organization. Even government hasn't done such a big thing. A lot of initiatives had taken place with the enthusiasm and energy of Rahul Karad and Dr. Vishwanath Karad. And you are here for the 2024 edition of the Student Parliament. My best wishes to you and very Happy New Year. The theme of this session, I was just invited here to this forum. I was actually participating in a different event which is happening simultaneously with speakers and chairpersons of the various state assemblies, and some MLAs are meeting to discuss a few serious issues. We concluded that session, and I was on my way to Bombay. Momentous decisions are being taken in Maharashtra politically, but then Rahul requested me to come and meet all of you. And thank you, Rahul, for giving me the opportunity to meet so many young leaders of tomorrow, students who are going to make the futures of our country tomorrow. साथियों, ये जो सभा है, ये सेशन है, वो युवाओं की शासन व्यवस्था में, राजनीति में, हमारे देश के विकास की प्रक्रिया में सहभाग लेने का सेशन है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हम राजनीति करते हैं, हर 5 साल चुनाव होते हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है। आप में से कई लोग पहली बार शायद मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे, और आपको इस चुनाव के माध्यम से देश की दिशा, देश किस तरफ जा रहा है, उसका फैसला करना है। घोषणाएं तो बड़ी सारी होती है, अच्छी होती है, लेकिन शायद हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जब भारत की स्वतंत्रता को 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो शायद हम विकसित देश बनेंगे। बहुत अच्छी घोषणा है, हमें सभी को अच्छा लगेगा अगर वास्तव में ऐसा घटे, लेकिन मुझे आशंका है कि जिस गति से देश का विकास हो रहा है, शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है। देश में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी ही, लेकिन सवाल है कि कब होगी। महाराष्ट्र एक न एक दिन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अवश्य बनेगा, लेकिन कब बनेगा, और उसका वास्ता है रेट ऑफ ग्रोथ के साथ, हम किस गति से हमारा विकास हो रहा है। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि उस गति से नहीं चल रहे कि जिस गति से हम 2028 तक राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, या देश की $5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। हमें और गति से विकास अपना करना पड़ेगा। इस गति से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इसमें हाथ बताना पड़ेगा, युवाओं को हाथ बताना पड़ेगा। चाहे आप इंडस्ट्री में काम करें, शिक्षा क्षेत्र में काम करें, रिसर्च करें, नए स्टार्टअप बनाएं,
खेती करें, प्रिसिशन एग्रीकल्चर करें, जिस मर्जी खेत में आप काम करेंगे आपको विज्ञान टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अब जानते हैं कि इस देश में जो भी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था थी, हजारों साल से चलती आ रही थी, जिसके चलते देश हजारों साल तक गुलामी में रहा। बाहर से लोग आए, कुछ सैकड़ों हजारों लोग आए, लेकिन पूरे हमारे इतने बड़े कॉन्टिनेंटल साइड देश पे कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बनाया, हमको प्रताड़ित किया। लेकिन वही देश, वही भूमि, वही जनता, जब हम आजाद हुए, जब हमने अपना संविधान तैयार किया और सभी को हमने समानता की, न्याय की, बंधुत्व की गारंटी दी, उस संविधान में यह ताकत थी कि वही देश जो हजारों साल तक गुलामी में था आज एक महाशक्ति बनने की कगार में है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें क्रमांक पे पहुंची, हमारा मिलिट्री पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है। आज हमारा पड़ोसी देश पहले हमला करता था, जंग लड़ी, लेकिन अब हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस पर पड़ोसी की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था जरूर बने हैं, लेकिन अगर हम पर कैपिटा टर्म्स में देखें, जिससे कि हमारी सुव्यवस्था, हमारी समृद्धि, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, तो पर कैपिटा जीडीपी टर्म्स में हमारा 140वां नंबर है पूरे दुनिया में। 140 के करीब करीब देश, छोटे छोटे देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश भी हमसे अधिक समृद्ध है। उनका पर कैपिटा इनकम भी भारत के पर कैपिटा इनकम से आज ज्यादा है। हमारा देश विश्व में 140वां नंबर है। इसको हमें सुधारना पड़ेगा, तभी हम कुछ जाकर हम एक विकसित देश की बात कह सकेंगे। बहुत आह्वान है, चुनाव आ रहे हैं। 2014 में हमने अच्छे दिन की बात की, आर्थिक बातें की, बाहर से पैसा लाने की बात की, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, लेकिन वो नहीं कुछ हुआ। 19 ने हमने थीम बदल दी और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की। बहुत अहम मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज शायद दुर्भाग्य से हम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो क्या हम सेक्युलरिज्म को छोड़ने वाले हैं? मेरी प्रार्थना है कि आप आम आदमी की समस्या, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, किसानों की आमदनी की बात है, महंगाई की बात है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए कुछ सुझाव दीजिए। आप शायद सरकार में हो, पॉलिसी प्लानिंग लेवल में ना हो, लेकिन आप बदलाव कर सकते हैं। युवा अगर चाहें तो बदलाव कर सकता है। आप सुझाव दीजिए कि किस तरह से हम हालात बदल सकते हैं। क्या हालात बदलने के लिए राजनीतिक बदल जरूरी है? क्या उसके बगैर राजनीतिक बदल हो या नो, क्या हम इस तरह का प्रेशर निर्माण कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी पे कि पब्लिक पॉलिसी प्रो पीपल हो, जिसके चलते किसानों की आत्महत्याएं बंद हो, जिसके चलते सुशिक्षित शिक्षित युवाओं के रोजगार मिल सके, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से छुटकारा मिल सके। ये सब हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पब्लिक पॉलिसी में प्रवेश करना पड़ेगा। पब्लिक पॉलिसी का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें राजनीति में आना है, हम क्या करें? भैया, राजनीति में आने का मतलब क्या आपको चुनाव लड़ने से है? आपको एमएलए एमपी बनना है? अगर नहीं तो फिर आप पब्लिक पॉलिसी में आइए। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, कोई इशू जो देश के सामने उस पर कोई हल निकालिए, अपने सांसदों को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को बताइए कि इस तरह के बदल होना जरूरी है। अब बहुत सारी रोज दुनिया में समस्या आती है, कभी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी नए रोजगार नहीं निकल रहे हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, कहीं आरक्षण की चर्चा हो रही है,
आरक्षण की आंदोलन इसलिए हो रहा है कि शायद बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चाहे डायरेक्ट राजनीति में, डायरेक्ट इलेक्टिव पॉलिटिक्स में आए या ना आए, जो आना चाहे जरूर आए, लेकिन आप जरूर पब्लिक पॉलिसी से इंटरैक्ट कीजिए, क्योंकि ये देश आपका है। देश किस तरह से चलेगा, नीतियाँ कौन निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित करेगा, उसमें आपका विचार आना आवश्यक है। हमारा युवा देश है, लेकिन युवाओं को पब्लिक पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में सहभागी होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये फोरम जो आपको मिला है, इस फोरम में अपने आप विचार प्रकट कीजिए और आगे निकलिए, हिम्मत से आगे निकलिए, संगठन बनाइए, चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और देश में बदलाव लाइए। मैं समझता हूँ कि भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है, लेकिन योग्य नीतियाँ और योग्य निर्णय लेना आवश्यक है। मैं इस संसद को, स्टूडेंट पार्लियामेंट को अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 13 साल के बाद एक नई पीढ़ी के युवाओं को, नए पीढ़ी के विद्यार्थियों को मिलने का मौका मिला। राहुल भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस तरह के नए नए उपक्रम यहाँ पे ला रहे हैं और हमारे युवाओं को एक एम्पावर कर रहे हैं। थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू। Thank you very much, Shri Prithviraj Chauhan ji. Thank you very much for, can we have the mic please? I request all of you to give a standing ovation to Honorable Prithviraj Chauhan sir. Sir has, because this has become an institution in the whole country. So many platforms, students, youngsters, they have created now, inspiring. They have gone here, the office bearers of Bharatiya Chhatra Sansad in last 13 years. So, sir, the credit goes to you also equally. I do not want to just flatter you here, but 13 years later you are here again. So I'm also emotional. Thank you. Thank you. I request Shehzad Poonawala ji and I request Prithviraj Chauhan ji and Basavaraj Horeti ji, if they can please answer some of the questions from our students. I request them to kindly come forward. So the first question is coming from the right-hand side podium. From Madhya Pradesh, Aryaki is there with us. I request Aryaki on the right-hand side podium. Are you there? Yes. I request you and all the students to please ask a small question and a small answer. I request you to ask a small question and I request the dignitaries to give small answer so that I'll be able to take many questions. Chota sawal, chota jawab. I request the Aryaki, please go ahead. Okay. Am I audible? Yes, please go ahead. Okay. Namaste, sirs and ma'am. This is my question to you. Indians are illegally migrating to various countries in search of jobs and livelihood. Did we fail our youth? What are your views on this? Okay. So Aryaki's question is, many youth, Indian youth is migrating abroad. So have we failed them? Have we failed them giving opportunities here in India? Yes, Prithviraj sir. Very interesting question. But let me just give you a little background and little statistics. The gross enrollment ratio, that is the number of people who are going to college, of the college going age group, is 25% in India today. Only 25% people who can go to college do not go to college. 75% do not go to college because there is no facility, they can't afford it, they have to do work. India wants to take this number to 50% by 2040 or something. Now imagine if the number of people seeking jobs, high quality jobs for graduates, whichever field, doubles, what will happen? It's my humble opinion that because we are not grown at the rate other countries have grown, particularly China has grown, it will not be possible for our country, our government, whichever government comes, to provide jobs for all the people, good jobs at the graduate level in our country. They will have to migrate. And if they migrate, there's nothing wrong in it. It's not a brain drain, it's a brain bank, they come back. But unfortunately, the real answer is we have to grow at a much higher rate
not at 6.5% that we are growing today, but Right. a rate of at least 10%, 9 to 10%. Sure. Thank you. Shehzadji would like to comment? Well, I request all the dignitaries if we can keep the answers short so that I'll be able to take more questions. And students also, chota sawal, chota jawab, please. Yes, Shehzadji. Look, I think this is an issue that has a long legacy, wherein we have lost a lot of our talented people because they did not find the right opportunities. But today, what is also a reality is that many people who are living abroad are now today thinking of investing and coming back to the country because they see that a new India is on the move, whether it's on infrastructure, whether it's on economy, whether it's on the kind of position India has in the global economy and global foreign policy affairs. So I think a lot of people are also looking to invest back and come back to India. And I think that as we grow bigger and bigger, the number of people who want to come back to India will also increase. Sure. Thank you so much. The next question is coming again from right-hand side podium. Shivam Dubai from Mumbai. Shivam, are you there? Yes, please go straight to your question. Chota sawal, chota jawab, please. Go ahead, Shivam. How can we bridge the gap between the aspiration of the youth and the reality of political system? Okay. Speaker. Okay. Look, it's a very good thing if youth is aspiring for higher things. They should, they must aspire. But as I said, all of us, whether in opposition or the ruling party, in our own ways, in some states, we are sometimes in the ruling party, sometimes not. We're all trying to see that our growth rate goes up, we grow. It is an attempt of every political party, whether in the government or otherwise, to make sure that we grow faster and create more jobs for our youth and move more people from agriculture to industry and service sector. True. But maybe we are succeeding, maybe we're not. True. Thank you. Shehzadji would like to add? जहाँ तक मैं इनका सवाल समझ पाया, ये युवाओं की प्रतिभागिता राजनीति के विषय में बोल रहे थे। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि युवाओं के लिए परफॉर्मेंस के आधार पर, ना कि परिवार के आधार पर तय किया जाए कि उनको क्या जगह मिल सकती है राजनीति में। यदि परफॉर्मेंस बैरोमीटर होगा, ना कि किस परिवार से आप आते हैं, तो मुझे लगता है युवाओं के लिए और दरवाजे खुलेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष किसी का बेटा नहीं, ना किसी का बेटा ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन सकता है। इसीलिए ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता थे परसों तक और मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है कि अवसर देने के लिए युवाओं को परफॉर्मेंस के आधार पर, ना कि परिवार के आधार पर जांचना चाहिए। Thank you very much. The next question is coming from left-hand side podium. Khushi would like to ask the question. Khushi, please go ahead. Straight to your question, please. Hello. Yes, go ahead. Yes, you're audible. Is the emphasis on youth leadership more prominent during election campaign, and does it translate into sustained involvement post-election? Okay. So her question is, I repeat, is the emphasis on youth leadership is only prominent during election times? Does it really sustain post-election? Or the focus on youth is only a election agenda? Sir is The asking. senior of the politics, the system will be changed. Otherwise, what she said, it is 100% right. I appreciate her. The system should be changed. Okay. If I can add, at least in my party, Indian National Congress Party, the leadership is being given to younger people, a lot of younger people. Where we do not give leadership to younger people, we have not performed well. Where we are given leadership to younger people, we have done well. And if you look at the profile of the Indian National Congress Party, it's being run by many young people today. And all youths, they are not coming forward to participate in the politics. And in election they are coming and they are supporting some people. Why they are not fighting and why they are not getting this elected by the assembly or council or parliament? All you should come forward to take part in the politics. Those who are coming, youngsters who are coming in the politics, assembly or parliament, it would be very good and it will be improved in the country system. Thank you. Thank you very much. We will take the last question from right-hand side podium.
Afreen Sheikh is asking the question. Afreen, are you there? Yes, Afreen, please go straight to your question is a little longer. Please make it concise. Good evening, one and all. So my question to you is, the democratic principles of liberty, equality and fraternity was hard-earned through the hard work and struggle of our freedom fighters. Then why, in today's democracy, the voice of the youth is stamped upon? Okay. Anyone? Well, I think every political party will have to involve, encourage, promote and give responsibility to youth. Political party which does not do that will fail miserably. And I think I tend to agree with Shahzad without using his words. I think what is required is more democracy in every single political party. It is not that Parivarvad is there in one particular party, it is happening in ruling party also. Many examples are there. I think best thing is, instead of going into who did more of these things, the important thing is that we make sure that all political parties have more democracy, so automatically youth, which is the very large number, gets active in the process and represents themselves in the political decision making. That is happening. But we should all fight for more internal democracy in the political parties. Sure. देखिए, मैं अपने अनुपेश नहीं होती और खासकर कुछ मानसिकताओं की वजह से सोचा जाता है भाजपा में तो कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्पेस नहीं हो सकती। परंतु मैं इसमें आपसे कहना चाहूँगा कि यदि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट नाम का संस्थान राहुल कराड़ जी ने तैयार नहीं किया होता तो आज आपके समक्ष इस भारतीय छात्र संसद में शहजाद पूनावाला बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नहीं खड़ा हुआ होता, क्योंकि एकमात्र मेरे लिए इंटरफेस। और मुझे जब यहाँ तक याद आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान जी हमारे बैच को भी एड्रेस करने आए थे, तो आज मेरे लिए सोचिए कितना बड़ा फैन मोमेंट है कि जिस व्यक्ति ने मेरी क्लासरूम को एड्रेस किया, आज मैं उनके साथ उस स्टेज पर खड़ा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें राहुल है तो मुमकिन है। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद very much. Thank you all the dignitaries for taking the questions. Thank you so much. And now it's the moment in this session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad that we vote on a very, very important resolution. I request everyone on the stage, off the stage, to please take out their mobile phones and scan the QR code. I request all the student leaders sitting in the front, faculty members, dignitaries on the dais, I request everyone to be seated, please. Dignitaries on the dais, please take out your mobile phones, scan the QR code and vote for this resolution. The resolution is, the 13th Bharatiya Chhatra Sansad appeals to all the political parties to provide not less than 1/3 of the seats in the state legislatures and the parliament to the youth to enable them to contribute their best in decision making and policy formulation for Vikasit Bharat. 13वीं भारतीय छात्र संसद सभी राजनीतिक दलों से अपील करती है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में युवाओं को कम से कम 3/3 सीटें दी जाए ताकि वे विकसित भारत के लिए निर्णय लेने और नीति निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके. I request all of you to please scan the QR code and vote agree or disagree. कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी जनहित की। Guys, your time is getting over. I request everyone to quickly vote.
The time will be over in next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. And your time is up, my friends. I request my technical team to show us the results of the vote. Of course, it will take a couple of seconds. I request the team to show us the result of the resolution. But meanwhile, let me remind all of you, my friends, that tomorrow we are going to have yet another important sessions. Tomorrow we will have the session 2, that is Yugantar, Youth in Transition, in which we are going to have tall personalities with us. We are going to have Suresh Garimalaji, Swami Mukundanandji, Vikram Sampatji. We will also have the third session, Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. We will have Shri Awadh Bihari Chaudhary ji. We will have Bhavya Bishnoi, Mohammad Mohsin P, Shaila Rashid ji, Gurdeep Singh Sapal ji, Shri Apurva Singh ji, Shri Chandrakant Dada Patil ji, UT Khadir Farid ji, and we will also have fourth session, Lok Sanskruti Ki Shakti, the power of folklore in our culture, in which also we are going to have Shri Kuwar Manvendra Singh ji. We will have Sudhanshu Shekhar ji, Suresh Garia ji, Manoj Muntasir, and I'm sure you all are really looking forward to listen to Manoj Muntasir ji, Malini Avasthi ji. So tomorrow's day is also going to be a lot of enthusiasm and happening. I request my technical team to show us the results of the voting on the resolution. Meanwhile, we have a few more important announcements for you. Dear student friends, the 13th Bharatiya Chhatra Sansad is indeed a pivotal step in the journey of involving the youth, that is you, in the democratic processes. Though as we are all well aware that since all of you cannot come to the stage to discuss issues, we do have something formulated for you, the Youth to Youth Connect. It is one of the biggest highlights of Bharatiya Chhatra Sansad, where our youth can gather in smaller rooms and discuss solutions to issues of national matter and interests. I request the technical team to kindly display the schedule for the Youth to Youth Connect. Here, as you can see, 6 various issues will be addressed in rooms of the Maitreya building, which is right behind the main stage. I request all of you to take a photograph of the same. It is also instructed that all of you gather in these rooms immediately right after this session ends. So to all the student leaders sitting here, kindly select one of the given topics and be a part of formulating solutions to these national issues and engage in integral discussions of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much, and once again, it is a humble request to all of you to enthusiastically participate in the Youth to Youth Connect. Thank you. Thank you very much. And I would now like to request all the dignitaries on the dais, if they can please rise in their seats and hold this 13th Bharatiya Chhatra Sansad brochure in their hand for a memorable photograph. Please join. आओ अब कुछ बात करेंगे A big round of applause, my friends, for all the dignitaries. आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात Thank you very much, all the dignitaries. Tomorrow, my friends, we all are going together at 8:30 a.m. sharp. Between 8:30 to 8:40, we all must be here so that we can start with the session on time. And now I would like to request all of you to please join in the Youth to Youth Connect activity, which is going to happen in the classrooms. I request my technical team to once again show the classrooms. You all are requested to proceed for the Youth to Youth Connect activity, which is going to happen in these classrooms in the Maitreya building. Tomorrow morning at 8:30 a.m. to 8:40 a.m. I would like to see you all back here for the second session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, Yugantar, Youth in Transition. A very, very important session that is going to happen.
Dear students, please participate wholeheartedly in Youth to Youth Connect. See you tomorrow all at between 8:30 a.m. to 8:40 a.m. in this very auditorium for the second session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. Sani pa ma ga ma pa ni sa ga ma ga sa ni pa ni sa ga